Assalamualaikum and good morning. I am General Harun Aslam, retired, and I welcome you on behalf of the Iqbal Institute of Policy Studies. Today we are having a live webinar titled Roshan Apna Ghar, a Home Back Home. First of all, I would just like to say a few words about the Iqbal Institute of Policy Studies. It is an independent research institute with a mission to generate, track, and advocate public policies towards the achievement of sustainable development in Pakistan. It is the first think tank in Pakistan that has a sharp focus on research on all dimensions of real estate development and allied industry. In addition to taking on research projects for policy advocacy, IPS has embarked upon the concept of swift research, wherein it undertakes time-bound research and compiles a series of reports for policy and decision makers' attention. About today's webinar, Roshan Apna Ghar is an initiative of the State Bank of Pakistan for non-resident Pakistanis to acquire properties in their home country. Under this scheme, overseas Pakistanis can complete their transactions remotely and digitally, with their investment being fully repatriable. The non-resident Pakistanis can now purchase or obtain financing for our houses in Pakistan through the Roshan digital account. And I'll not like to steal the thunder from what my eminent panelists are going to talk, so that should suffice for the introduction. We will also dilate on the impact of this scheme on the real estate industry in Pakistan and resultant impact on economic resuscitation, which is badly needed. The aim of this webinar will be served well if we are able to highlight all the relevant and significant aspects of Roshan Apna Ghar scheme for overseas Pakistanis. We are fortunate to have eminent panelists who are from diverse backgrounds but can be considered as specialists in their respective professions. We have Mr. Salimullah. He is Executive Director at the State Bank of Pakistan. He has 27 years of diverse experience in banking sector. Today, he will talk on concept of Roshan Apna Ghar and the vision behind it. We have Mr. Farid Alam. He is CEO of AKD Securities Limited. He is a chartered accountant by profession and has more than 20 years of experience in the banking sector. Today, he will share his evaluation about the Roshan Apna Ghar scheme and Roshan digital accounts. Then we have Mr. Shafiq Akbar. He is Chairman and CEO of Emarat Group and Garana.com. He is an accomplished investment advisor and a real estate analyst with over 20 years of experience, mostly in overseas and in Pakistan also. Today, he will discuss the topic incentives and opportunities in the real estate sector for overseas Pakistanis. Then we have Mr. Asif Rehaz. He is the Group Head, Bank of Punjab. He has professional experience for 24 years in the field of banking, commercial and retail financing, agricultural credit, administration, and internal audit. Today, he will speak on the obligations and incentives of Roshan Apna Ghar for the banking sector. We have Mr. Farhan Javed. He is Group Director, Garana.com and Emarat Group of Companies. He has experience of well over a decade in the field of marketing, technology, and investment consultancy. Today, he will talk about the relevance and opportunities of real estate and allied industries in the housing sector of Pakistan. May I also add here that as we proceed with today's webinar, Mr. Zafar Masood, who is President of Bank of Punjab, will also join in. About the conduct of the webinar, each participant will be requested to speak on a particular topic for about 15 minutes or so. After the round of speech by all participants, we'll have a general discussion and Q&A session. इधर मैं ये भी आपको बताता चलूं कि हम बाइलिंगुअल जाएंगे और इसमें हम उर्दू में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे. अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में करना चाहे, पंजाबी, पश्तो में, तो ही इज ऑल्सो वेलकम. क्योंकि मकसद ये है कि जो आज की डिस्कशन है, ये ज्यादा से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज को इसका पैगाम पहुंचाया जाए. तो टू स्टार्ट विद, आई वुड रिक्वेस्ट Mr. Salimullah. Sir, floor is yours.
आप अनम्यूट कर दीजिए अपना। जी, thank you so much, Jana sir, for this very detailed introduction, and thank you to the Iqbal Institute of Policy Studies for taking this initiative to hold this seminar on Roshan Apna Ghar, which we believe is a very attractive product and platform for the overseas Pakistanis. So why the central bank last year came with the concept of Roshan Apna Ghar, the Roshan digital accounts, Roshan Apna Ghar we have just launched. The objective was that we wanted to connect the overseas Pakistanis with our banking and payment system. We wanted them to have all the banking facilities available in Pakistan while sitting in their respective countries of residence. Because using the advancements in technologies, particularly the communication technology, we should be able to provide that platform to our overseas Pakistanis, which are contributing handsomely in our economy through their remittances, which each year is increasing 10 to 15%. Last year they increased by 20%, and we received about $29 billion of remittances from our overseas Pakistanis. So the objective was to connect them with the Pakistan banking system so that they can play their role in the economic development in the country, and earn the handsome returns. So by now, you could see that we have connected over 234,000 NRPs with the Pakistani banking system. Almost 235,000 accounts, RD accounts, Roshan digital accounts have been opened. And on average, 1,100 to 1,200 accounts are being opened on daily basis. So there is momentum that is continuing, that on average, on daily basis, 1,100 to 1,200 accounts are being opened. And on average, $11 to $12 million daily are being contributed and remitted by the overseas Pakistanis in the Roshan digital accounts. So far, we have received about $2.3 billion, approximately $2.3 billion. थोड़े से कम है उसमें, about $2.28 billion. So $2.3 billion के करीब we have already received the remittances. About $1.6 billion has been invested in the Naya Pakistan certificates through these investments. The Naya Pakistan certificate that was issued by the government of Pakistan for the overseas Pakistanis, offering very attractive returns to our overseas Pakistanis. So that is the background on the basis of which we initiated the Roshan digital account, and Alhamdulillah, it has been a mega success. So this Roshan Apna Ghar is an additional product under the banner of the Roshan digital accounts. The aim is that, as Janal Sahab very rightly pointed out, that the aim is that we should provide a platform to the overseas Pakistanis to invest in Pakistan's real estate sector digitally and remotely, and providing full convenience and hassle-free environment to our overseas Pakistanis. Pehla objective to ye hai that they should be able to invest in the real estate sector of Pakistan with a very convenient platform. The second objective is that the overseas Pakistanis that need financing from our banks in Pakistan to buy or purchase or renovate their houses for their family members or for their loved ones here in Pakistan, so they should be able to have access to the financing arrangements as well. So these are the two broad objectives. One, that they should be able to invest. Two, that they should be able to obtain the financing for building the houses in Pakistan for their family members. Now the question comes that the overseas Pakistanis are already investing in the real estate sector. Then what is so special with the Roshan Apna Ghar? The specialty, there are two or three specialties with this investment. That one, that for that investment, they have to come physically here and
select the properties, and then make payments. That takes a lot of time. It's a pretty long way. So what we have done in Roshan Apna Ghar, so as far as the processes that relate to requesting the respective bank where the overseas Pakistanis are maintaining their Roshan digital account, requesting them digitally to allow them to make investment from their own resources in a particular property. तो पहला तो प्लेटफॉर्म हमने ये दिया कि आपने सारा का सारा हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उनको दे दिया. They will be digitally requesting, making all the requests digitally to their respective banks. Banks will be making evaluation of the property and assessing the details of the beneficiary, because they need to see that the payments that they are making, that is not a person which is in the prescribed list. So that authentication will have to be made by the banks. After that, once that process is done, then the overseas Pakistani is just required to nominate any person, the family member, friend, lawyer, attorney, whatever it is, who would be administering that the sale or the transfer of the property in his or her name. Because abhi ye wala jo process hai registration of the property and the transfer of the property in the name of the investor, ye wala leg abhi manual hai, because that needs a lot of amendments in the legal framework. Us par bhi we have initiated work, but that is a work in process that will take some time, because it entails the federal legislation as well as the provincial legislation. So going forward, that will also be made available. But for the time being, as far as the processes that entails the banking system, वो सारे के सारे digital है, and the processes अभी जो registration वाला process है उसमें there will be a nominee of the investor, overseas Pakistani, जो कि इसको administer कर लेगा यहाँ पर पाकिस्तान में इसकी sale. The other very important aspect, कि अभी तक जो investment आ रही है by overseas Pakistani in the real estate sector, that is not repatriable. It is they make investment, and when it comes to the point that they want to take that investment back to their country of residence, there is no formal channel available. So that creates huge difficulty for the overseas Pakistanis to take that investment back to their country. The investment in Roshan Apna Ghar is fully repatriable. The principal can be repatriated at any time. आज आपने investment की है, महीने के बाद आपने property sale कर दी है, you want to take your principal back, you can take it back. The only slight restriction that is right now available, it is the capital gains. The capital gains can be transmitted back 3 years after the purchase. वो भी क्या है कि जी वो that is also benefited both for the overall economy as well as the overseas Pakistani, that both as a speculative activity ना हो जाए. The capital gains can be repatriated 3 years after the initial investment, but they can be, ये मतलब नहीं है कि वो जो capital gains अगर आपको मिला है, आपने 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद अपनी property sell कर दी है, तो capital gain आपको मिला है, you cannot use that capital gain for investment in Pakistan. You can use that investment. You can invest in Naya Pakistan certificates. You can invest in the stock market. You can invest in mutual fund. You can invest in other real estates. जो आपने और real estate में करनी. So capital gain can be transmitted 3 years after the purchase, whereas the principal can be repatriated any time after after you have made the purchase. Then the third aspect that is very relevant with respect to the Roshan Apna Ghar and RD investment is a very simple and full and final taxation regime. When we were developing this RDA scheme, we conducted a number of focus groups and did surveys as well.
one of the major concerns that was highlighted by the participants was that what would be the tax treatment? Would we be required to file the tax returns और वो सारा जो hassles associated है with respect to the filing of tax returns and answering to the tax people, तो उसको हमने सारा address किया. The investments that will be made in Roshan Apna Ghar through the Ocean digital accounts, they are simple and full and final. क्या simple है? The 1% you pay at the time of purchase and 1% you pay at the time of sale, and that's all. You are not required to file any return. That is your full and final settlement of the tax obligation. So ये जो taxation का treatment है, this is also very attractive for the investments that are being made through the Roshan digital accounts. और एक बहुत अच्छी जो हमने एक और innovation हमने रोशन अपना घर में किया है with the help of our colleagues in the industry, कि there are pre-approved projects. ये pre-approved projects क्या है? These are the projects where the banks have done the due diligence. The banks have checked and assessed the title documents of the project that has been announced by a builder or by a developer. The banks have checked all the regulatory approvals, that whether all the regulatory approvals are available with a project which is being announced by the developer. And then the banks have checked the track record of the builder and the developer for the last 5 years, for the last 10 years, किस तरह का track record है इन साहब का जो कि ये project announce कर रही हैं. तो ये इसके अलावा भी market feedback करने के बाद the banks have made a score that this project, say it has scored 70, the project B has scored 75, 80. The projects which are meeting the minimum score with respect to the overall criteria, तो वो projects enlist कर दिए गए हैं बैंकों की वेबसाइट्स पे, ताकि अब now the investor has a choice कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खुद से सिलेक्ट करनी है with the help of your family members and relatives available in Pakistan, उनकी हेल्प से, या आपने कभी खुद विजिट किया है, उसकी बेसिस पे you have selected a property, that's fine. You know very well कि the property कैसी है और सारा आपने इसकी डिटेल्स, उसका बैकग्राउंड चेक्स आपने कर लिए हैं. The other option is the pre-approved projects. To give the comfort and the confidence to the overseas Pakistanis कि मैं ये जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बिल्डर भाग तो नहीं जाएगा, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसके पास रेगुलेटरी अप्रूवल्स अवेलेबल हैं, इसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स किसी ने चेक किए हुए हैं, इसकी वैल्यूएशंस किसी ने चेक की हुई हैं. तो ये कंफर्ट देखिए, ये है, दिस इज एम्ड एट गिविंग द कंफर्ट टू द ओवरसीज पाकिस्तानी के एक ये प्लेटफॉर्म भी आपके पास अवेलेबल है, ताकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि किसी ने इसको देखा हुआ है, किसी रिलायबल इदारे ने एक ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया की बेस पे इसको असेस करने के बाद यहाँ पे रखा है, तो आपको कंफर्ट मिलता है. लेकिन मैं यहाँ पर क्वालिफाई कर दूं, ठीक है, there may be 100 projects that are being reflected on the website. उसमें से हो सकता है 4-5 में कोई डिलेज आ जाए. बैंकों ने ये काम जब आप खुद भी करते हैं, when you do the assessment by yourself, you see all the aspects. लेकिन there would remain some risk कि अगर हो सकता है कि बैंक वो कुछ uncontrollable circumstances है, उसमें कुछ delays, कुछ deviations आ जाए. But the objective was कि we should be able to give maximum comfort to our overseas Pakistanis कि इसके जो भी project आपके पास लेकर आया जा रहा है, that has been assessed and reviewed and examined by someone in the banking industry, and then it has been placed. That is giving the confidence. अब आखिर में मैं आखिरी 2-3 मिनट लूँगा, that the financing aspect. अभी मैंने सारे के सारे आपके साथ डिस्कस किए हैं इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट्स,
फाइनेंसिंग एस्पेक्ट में क्या है कि आपको यू नीड ए फाइनेंसिंग टू बाय अ हाउस, तो उसमें यू हैव टू ऑप्शंस अवेलेबल। वो ओवरसीज पाकिस्तानीज जिनके जिन्होंने जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई, या उनके पास सफिशिएंट बैलेंसेस अवेलेबल हैं अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में, तो दे कैन टेक फाइनेंसिंग फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ हाउस अगेंस्ट द लियन ऑन दोज नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, या जो उनके कैश बैलेंसेस पड़े हैं बैंकों के पास रोशन डिजिटल अकाउंट में। इस केस में इसको हम लियन बेस्ड फाइनेंसिंग कहते हैं। इस केस में द प्रोसेस वुड बी वेरी फास्ट। आपने सिर्फ अपने क्या देना है, आपने अपनी अप्लाई करनी है जो डिजिटली, यू विल बी अप्लाइंग डिजिटली, देयर आर अ वेरी फ्यू डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड, जो आप उसको अपलोड करेंगे। यू विल बी अपलोडिंग द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, या आपको प्री प्रूव प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन you will be giving the details of the beneficiary, जिसको जो seller है, और the within 5-6 days the transaction will be over. The other aspect is in the financing, it is that आप normal mortgage finance ले सकते हैं। आपके पास sufficient balance नहीं है अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में, या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, आप फिर भी रोशन अपना घर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रोशन अपना घर के लिए फाइनेंसिंग ले सकते हैं। इसमें क्या है कि here the property that you are purchasing, that property will be offered to the bank as a collateral. Here the maximum limit is about 85% of the value of the property. In case अगर आपने लियन दिया है तो उसमें up to 99 even 100% की फाइनेंसिंग हो जाएगी। But in case of रोशन अपना घर under normal circumstances, it will be 85%. Rates are very, very attractive. हमने काइबोर, अगर आपका लियन बेस्ड है तो इट इज काइबोर which is right now is 7.5%. अगर नॉन लियन बेस्ड है, जिसमें कि आपने मॉर्गेज करनी है अपनी प्रॉपर्टी जो आप एक्वायर कर रहे हैं, उसमें इस काइबोर प्लस 1.5 which is right now is around 9%. आखिरी बात कह दूं, उसके बाद आई विल बी कंक्लूडिंग कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान फाइनेंशियल हिस्ट्री हमने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के लिए भी फाइनेंसिंग अलाउ की है। कि देयर आर प्रोजेक्ट्स जो कि बिल्डर्स ने अनाउंस किए हैं। फॉर एग्जांपल घराना का कोई प्रोजेक्ट है या इमार का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने डाउन पेमेंट कर दी है, से 15% मैंने डाउन पेमेंट कर दी है, and now the quarterly installment is say about 30 lakh rupees per quarter. I don't have those 30 lakh rupees per quarter available with me. डाउन पेमेंट तो मैंने कर दी, बट जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मैंने पे करनी वो मेरे पास नहीं है। फॉर दैट आई कैन टेक फाइनेंसिंग फ्रॉम द बैंक। द बैंक will come in, then the bank will take the responsibility to pay those quarterly installments to the builder and the developer, and after 3 years or 4 years, whatever the completion period of the property is, the property then will be transferred in the name of the buyer, and the mortgage will be created. उससे पहले क्या होगा, there will be a tripartite agreement and the allocation letter that was issued by the builder or developer, that will be used as a security. तो ये सारी चीजें देखिए, मैं इन अल्फाज में कंक्लूड करूंगा कि all these objectives, चाहे वो रोशन डिजिटल अकाउंट्स है, रोशन अपना घर है, रोशन अपनी कार है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन सब का ऑब्जेक्टिव ओवरसीज पाकिस्तानीज को बेटर सर्व करना है। उनके लिए हम आसानियां पैदा कर रहे हैं, because they have been contributing a lot in our economy. So the aim and objective is to make things easy, simple, hassle-free for the overseas Pakistanis, और उनके लिए आसान और attractive environment पैदा करना है। I hope so कि जो भी मैंने information दी है, that would have been useful for the participants. Thank you so much. बहुत शुक्रिया सलीमुल्लाह साहब, your exposition, you elaborated amply on what is this concept, और ये कैसे इसको आपने सोचा, कैसा vision था. You mentioned that what were the objectives you mentioned, and you said that what is special about it.
you mentioned two things. One is that it is a digital platform, and then the investment is repatriable. और ये बहुत बड़ा एक इंसेंटिव है. मैं जो आपकी बातचीत से समझा हूं कि यहाँ 5 स्टेक होल्डर हैं. एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी हो गया, एक हो गया बैंक, तीसरा हो गया स्टेट बैंक एज द रेगुलेटर, एंड देन वी हैव द रियल एस्टेट कंपनी जो वो ऑफर करेगी प्रोडक्ट, एंड देन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और जो कोई कागजी कार्रवाई होती है. तो मैं जो समझाऊं, अभी जो आप ये कह रहे हैं कि ये डिजिटली पूरी तरह कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स, तो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा कि अगर एक आदमी बैठा हुआ वहीं से प्रॉपर्टी खरीदता है, मॉर्गेज फाइनेंसिंग लेता है, इट इज समथिंग अमेजिंग इफ इट इज डन होलिस्टिकली. दूसरा जो आपने बहुत अच्छा फीचर जो बताया है, दैट इज अबाउट सिंपल टैक्सेशन सिस्टम. 1% देना है खरीदते हुए, 1% देना है बेचते हुए, और इसमें कोई रिटर्न वगैरह नहीं है. आई ओनली विश दैट आर ये जो हमारी टैक्स रिजीम है, एंड दोज पीपल हु मैटर, they make the tax collection so simple in all other sectors also. लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं that they shy away. आपने मॉर्गेज फाइनेंसिंग की बात की, इस पे आगे भी हम बात करेंगे इस पे. तो थैंक यू वेरी मच सलीमुल्लाह साहब. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर आसिफ रियाज. सर, फ्लोर इज योर्स. Thank you very much, Lieutenant General Mohammad Haroon Aslam Saab, and thank you for inviting me to this August forum, and thank you very much to all the distinguished speakers and the respectable audience. Salimullah Saab has actually shed light on the product itself, its features, and the need behind introducing this product. I think government has given immense importance to the housing sector, and we still know that there is a huge supply and demand gap. So that's why government has focused on this key initiative. State Bank of Pakistan has partnered with all the banking industry in actually working a lot on this initiative, and I'm actually glad that we have been able to come up with the product, which is actually a start of this journey. And I think destination is still far away, but we have taken initial steps, and those steps are in the right direction. So just to give you a brief intro of what has gone into this housing segment in particular, is the foreclosure laws were amended in the first place, that there was a huge legal issues, and that is why the banks were actually shying away from going into this segment. Then the government came up with the government markup subsidy scheme for the low-cost housing, and then for the special segments as well. And State Bank and the government is so much involved that there is a steering committee of which is formed by the central bank, and which meets on fortnightly basis. So you can imagine what kind of importance and interaction is taking place in this segment. The banks have actually worked a lot in developing the income proxy models for the informally employed people, which is actually the biggest challenge for supporting this housing segment. A lot of work has gone into the standardization of the documentation, which is again one of the key impediments in growing this segment. E-tracking of applications, the introduction of the application portals has been introduced by certain banks. I think that is a very important milestone that has been achieved, and it's working in an efficient way. Government through State Bank arm is also doing the mystery shopping. So you can imagine that there is a constant check on the banking segment if they are actually coming at par with providing efficient service to the clients. So because besides that, there have been a tremendous amount of incentives which have been given to the developers and the realtors. Similarly, but despite doing all this, we see that this non-resident market is still untapped.
So most of these people, they have good investments. They want to invest in their own country. So there is a huge potential around that. But the biggest problem is the complexity of house purchases and especially the house finance transaction. So, and the toughest of all was to actually go around the money laundering and CFT compliance related issues. And I think that a lot of work has actually gone into that area, so that whatever we are doing today, that actually has been facilitated by introducing a lot of regulatory relaxations and considerations. So I think that is another very important area which has been taken care of. So I'll just give a brief presentation on this on this topic, which has been I have been asked to speak about it. Please presentation laga de. This is Roshan Apna Ghar. Please aage. So the agenda for today is the obligations for banking sector and the incentives. So I would not say that these are the obligations. First of all, I would say this is the service to the national cause. So I think banks have to take this initiative and this product in particular in that essence. So I don't think that keeping that obligation sort of thing in mind, we can actually take it forward. So first of all, we need to think that this is something for the national cause, and we all need to go into this proposition with full zeal and focus. So this is, I think, first of all, this is the one of the best possible propositions banking industry has actually come up completely out of box. There was no concept of giving financing facilities to the non-resident Pakistanis, especially when they are actually abroad. So I think the major breakthrough which was achieved was there is no physical presence which is required of the NRP at the time of banking facility approval or the application. So the whole process has been actually digitalized. There are different kinds of products in the Roshan Apna Ghar, which Salimullah Sahab has already spoken about, so I'll not go into that detail. All the communication with the applicants with regard to loan application, loan approval, their queries, and even the signing of the bank's related child documents has been completely digitalized. The product is offering in a very affordable kind of subsidized rate. And there is, on the topping on the ISIS, there is no prepayment penalty as well in case the facility is to be adjusted before the maturity. So I think with this intro, I'll move on. With regard to the service to the national cause, what we call it obligations today is, I have divided this in three areas. One is the awareness creation and marketing piece. So with regard to marketing, I think this is very important for the banking industry to participate in the international forums, connect with the local people who have their relatives living abroad, digital marketing, social media, and participation in expos. This is actually very important. So this is something which we feel that banks have to come up in a very strong way, is to provide and is to work out on attractive social media advertisements, bring in and good success stories in shape of short testimonials. This is very important. Branding of the product in local stations as well as abroad, flyers, standees, banners. This is very important. But above all, I think for the overseas Pakistanis, it's very important that we actually connect with the NRPs. So channels like Jadoo TV, local newspapers, local community-based magazines. So it's very important for the banks to actually participate and invest in this marketing effort by going into these advertisement areas.
I think it's equally important that banks set up the 24/7 call centers to help address all the queries of the NRPs, because we have like both the extremes. We have blue collar NRPs, and then we have affluent NRPs as well. So there are both the products which are available. There is general housing, then there is markups, government markup subsidized, low cost housing product. So we have all this stuff available. So banks need to respond very quickly and efficiently to the NRPs. And of course, there is a huge information which is now available on the bank's website. And I think this is very important for the banks to keep investing into this and keep pushing on this. Second important piece is the hand holding of the NRPs. This is very important. There will be an application, and things don't just move on with the loan application. I think the banks need to create this capacity to handhold NRPs. This is actually very important, because unless the non-resident Pakistanis, they are fully abreast of the requirements, they won't be able to get timely financing. So informative sessions in shape of online webinars or online Zoom calls, I think that can be helpful. Banks need to explain the process, and even the banks can actually go for the non-financial advisory, which is preparation of BOQs, and even banks can provide some assistance and guidance vis-a-vis the MAPS approval, or MAP even they have to help the NRPs in terms of developing a map, so banks can do that, and any local connection can take that map and deposit it with the development authority or the approving authority for actually getting it through. So I think the banks can actually can come up with these kind of non-financial advisory services. Outreach is important. We have to get into MOUs and agreement signings with overseas associations and groups, because that is where the demand is. We need to spread the word. So if the banks can connect with the overseas associations and groups, that can play a lead role in pushing this product and actually spreading the word. One very important lead is the existing Roshan digital account customers. Salimullah Sahab has also mentioned about this. We have 2,35,000 customers who are our existing Roshan digital accounts. So we can actually, the banks are supposed to connect with them through WhatsApp, through emails, through telephonic calls, and engage with them in terms of actually introducing such products, which is like Roshan Apna Ghar and Roshan Car. And banks are coming up with new products as well. And soon those will be also available on the offer. The second is the customer experience. This is very important. I think the subsidiary marketing ho sakti hai, that is the spread of word by the customer himself or herself. So if the banks are able to provide timely decision on the loans application, and they deploy adequate resources to respond to the client's queries, I think that is one very important piece which can go a long way in terms of marketing this product. The second thing is the digitalization of processes at banks level and with the other stakeholders. I'll give you just one example. With different stakeholders, including State Bank of Pakistan, we are talking to DHA, where it is being contemplated that there is a real-time transaction of the actually transfer of the property taking place. But it's a new phenomena for this market. Banks have been able to solve one leg of the transaction, which is customer is able to digitally apply for the loan and get a digital approval. So that piece is covered. Now the second leg of the transaction is actually
transaction taking place. So it's very important that the housing societies, DHAs, LDAs, or all such development authorities in the country, they also take a quantum leap and connect with the stakeholders, and whatever legislation needs to be done around that can go a long way in supporting this initiative. So if all the stakeholders can actually help with the second leg, I think that would change the canvas. So it's the game changer actually. Thirdly is the efficient, effective handling of customer queries and complaint management. It's a new product, it's a new learning curve for the banks. So everyone has to learn. With each passing day, we'll receive new queries, we'll receive new issues. So as an industry, banks need to proactively address those issues and solve them. Another factor which is very important is the optimization of processes. I think a lot of effort has gone into that. We have seen that different provincial governments have even done away or reduced stamp duty on the mortgage creation and things like that. But we still feel that there is a lot of work which can be carried out. Punjab has actually taken lead in terms of the verification of the documents. They have their LRM system has been introduced where for the suburban and the rural properties, banks can actually get those documentation verified directly from the revenue office. I think this can be replicated for the urban societies, and this can also help reduce the overall turnaround time. So this is very important. Again, the cost rationalization, because this is the new market. This is opening up new visas, new avenues. So the government bodies and housing societies, they can actually, we can give more to the NRPs by offering lesser taxes, lesser transfer fees for the NRPs to actually come and invest into this big opportunity. And customer remains the heart of every strategy. So I think this is the pivotal point. This is the fulcrum, and this is the nucleus of the whole thing. And thirdly, a third important aspect is bridging the demand and supply gap. Salimullah Sahab has spoken about it, that banks have been asked to shortlist the projects, put those projects on the websites. I think this is again very important. I'll just give you one example. Bank of Punjab has actually worked out certain arrangements with the developers where they have offered even buyback arrangements to the banks, adding more comfort for the banks to actually go and fund those projects, not just for the project development, but actually the end user side. So if the banks are able to push such certain arrangements, that would go a long way in inculcating the confidence of the investor abroad, as well as it would provide much comfort to the banks itself to go and fund those projects, both the legs, the end user piece as well as the project finance. So I think these kind of arrangements can go a long way in supporting these initiatives. So this is important that banks connect with all the renowned developers, and they will have a list of ready inventory with them. They can offer those inventory of houses to the customers. They can connect the customers and the developers. And there is already a laid down arrangement to pass on some incentive to the realtors as well. So it can actually work for all the stakeholders. And so this is how we can actually connect all the dots. So this is now I'll come to the incentive side. This is a very attractive value proposition as I look at this. This is a whole new idea, a new avenue which is completely untapped at the moment, and there is a tremendous potential. So how I see this, that कितने भी हम NRPs को हम इसमें लेके आएंगे, what I understand from my own experiences that NRPs are very well connected when they're abroad. So whatever the community is, they're all kith and kins.
So they regularly meet, even they meet the Pakistani diaspora more than when even when they are available in Pakistan. So if we are able to make some breakthroughs in the beginning that would spread the word, that would help us in creating a ripple and multiplier effect in terms of the lead generation. So I think this can be a very good opportunity for the banks. Of course, there is a huge cross-sell opportunity for the banks. The one way is that you get the deposits and then you offer them your balance sheet, and the other way is that you offer the balance sheet first, and then in return you also get the deposits. You can sell insurances, you can offer them multiple investment projects. So this is both pull and push strategy. With a mix of this, I think banks can actually get a lot of benefit by selling this product. So by deploying balance sheet, banks will really have a handle on the client's pulse. They can ask for deposits. They can sell multiple products. They can sell the car, but they can sell even personal loans. So there is a lot of opportunity which would come through. Of course, financial inclusion is again a very important piece, and information and data is a new gold mine. So by going into this new market segment, banks will have a new kind of information and the data which can be effectively used to develop scorecards, develop different algorithms which can actually help banks to offer various other kinds of products as well. This is something which has been offered to the clients, offered to the banks in terms of pushing this Roshan Apna Ghar product. Risk weightage for residential mortgage finance has been reduced from 35% to 25% for the low cost housing. Similarly, banks have to pay a hefty tax, but for the low cost housing piece, that tax has been reduced 20% until year 2023. So these are some immediate incentives which are available for the banks to actually help to go into the segment. And the second thing is that, of course, if with the more remittances coming in, the banks will have more deposits and they can actually capitalize and grow their balance sheets. How mortgage market was almost non-existent in Pakistan. It's still at its infancy stage. With this product and with the push which has come from the government and the State Bank, the housing sector has actually that will enable the banks to diversify their consumer portfolio. Earlier, the banks were only focusing on the credit card, the personal loan, and auto loans. So I think that this is an excellent product which would help banks to diversify the consumer portfolio base. Again, this also provides an excellent opportunity for the banks to engage with other allied housing and construction sectors, because once the housing sector grows, there are so many industries which are linked with that, and once the housing sector grows, other industries also grow. So as an impact, banks can go and get into those other sectors as well and finance those. That would create a whole ecosystem around that. There would be deposits, there would be lending opportunity. So I think that again provides a lot of benefit to the banks. Of course, these non-resident Pakistanis, normally they have better cash flows, they have better revenues. So the portfolio which banks would build on this, that would be a better quality portfolio. Please. Lastly, I have put up this slide which talks about certain challenges. I think it's, as I said earlier, it's the start. We have started this journey. The product understanding, the process flow, and the transaction itself. We need to work a lot in terms of creating this awareness. As we speak, banks and the people at large, particularly Pakistan diaspora, they lack awareness about this product. So a lot of effort needs to go into this to create good understanding of the product and its related process flows.
Secondly, there are some legal issues. Not that the banks have started financing today and there are some legal complications. No, this legal issue is with regard to that particularly the banks, and this market has not yet tested this kind of documentation, which is being digitally signed. There are no examples, there are no precedents. So if anything goes wrong, we have to yet see how the courts will respond to these digitally signed documentations. And similarly, we are relying on the digital identity which is provided by the clients. So again, there is an independent source of verification of the identity of the customer. And thirdly, there is an element that since the principal is residing abroad and his immediate relative who is in Pakistan, we have seen that money matters a lot, and there are at times dispute between the principal and the nominees. So we have to keep that factor in mind as well. Of course, there is a serious dearth of good quality people who knows the mortgage business, and particularly who knows the Russian Apna Ghar business. This is a new product, so we need trained resources for this, and banks need to come up with a trainees batch program where they can actually impart training for this particular housing segment, and particularly for this Russian Apna Ghar piece. And one important piece is the taxation issues. In certain countries and certain geographies, there is an issue of double taxation. So if you invest in Pakistan, people who are abroad, they have to give tax on those investments. And once they repatriate such funds back to their countries, those funds are treated as their income, and so again they have to pay taxes. So I think even at the government's level, some work needs to take place, which can actually take some steps and help address these issues. Of course, I've spoken about the verification issue, which is again how the banks would actually verify the antecedents of the client. So banks are actually they have actually shown their heart, and they have gone into this segment, but there are certain complications. Banks cannot, while sitting in Pakistan, but they cannot go and verify the antecedents of the applications. Again, if there are certain transactions which are taking place on the basis of power of attorney or certain documentation which are required to be attested by the embassies, embassies are only available in the big countries, big cities. I hate to interrupt, wind up kijega, please. Because of time constraint, I thought if you could wind up. Gigi, left. Jalsa, this is the last slide. So great. Okay. Thank you, Jalsa. बहुत शुक्रिया, Atif Saab. Thank you very much. You elaborated, what, and I agree. These are the services, not the obligations. And I actually coined this term when I was just writing this topic. And in my background, in the back of my mind was one aspect that looked back about a decade or so, and even in the recent past, banks would shy away from investing into real estate sector. They shied away always. So this was one aspect that I thought but you are right, banking is a service, and banks are very important stakeholders, because this Apna Ghar cannot function without the active participation and motivation and incentives for the banks. Challenges, we'll talk about it later. The best two things, the punchlines which I noted was that the non-resident Pakistanis are the heart, they have to be at the heart of any strategy. We have to make things user-friendly at this stage. Thank you, sir. I'll request Mr. Shafiq Akbar, please take the floor, sir. Thank you, General Saab, IPS, and everyone attending the session. Thanks for having me. And for the listeners, I'll be speaking about incentives and opportunities for overseas Pakistanis, as far as Roshan Apna Ghar is concerned. रोशन डिजिटल अकाउंट्स, इसके बारे में सलीमुल्लाह साहब ने भी बात की, और फिर आसिफ रियाज साहब ने भी काफ़ी इसके ऊपर बैंक्स के पर्सपेक्टिव से भी बात की.
I think is probably the most significant initiative the government has taken to facilitate overseas Pakistanis. तो मैं थोड़ा सा इस सेशन में I'll introduce Roshan digital accounts and Roshan Apna Ghar. Then I'll talk about the features of Roshan digital account and Roshan Apna Ghar. I'll talk about the incentive and opportunities for overseas Pakistanis. Challenges, obviously, you know, since it's a new thing, इसके challenges भी हैं, जैसे Fiyaz साहब ने mention किया, उसके अलावा भी कुछ challenges हैं. I'll talk about the challenges and I'll talk about this some of the challenges from the real estate perspective जो हैं उनके solutions के बारे में भी. And then I have few questions जो अभी तक हमारी conversation हुई है उसमें से कुछ questions and I'll ask those questions. So that would be the sequence. The first one, as far as Roshan digital account is concerned, और फिर Roshan digital account के through ही Roshan अपना घर जो है, जो हमारा एक नया product है government का, that offers two things. In case of Roshan digital accounts, Pakistan में अपने पैसे, I've been an overseas Pakistani as well, easily, conveniently banks के through वो remit कर सकते हैं. Under the Roshan Apna Ghar, now SPP has introduced two options again. One is the investment, कि हम यहाँ पे कोई भी property overseas Pakistanis पाकिस्तान में खरीद सकते हैं Roshan digital account के through पैसे भेज के. And the other very exciting option is the financing option, कि हम finance भी कर सकते हैं, जिसको mortgage का जो option दिया है, और उसके अंदर financing option के अंदर तीन हैं कि हम एक we can purchase a property, कोई भी बनी हुई property है उसको खरीद सकते हैं, we can purchase a plot और फिर उसको बना सकते हैं, and then we even can do the renovation. Renovation के लिए भी finance ले सकते हैं 5 million से 1 crore की, और उसमें 15% हमारा deposit है, 85% loan to value या debt to equity है, और उसमें भी option है कि जो 15% है इसको भी किस तरीके से, अगर आपके पास already किसी और तरीके से आपने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ तो उसको लियन करा के आप अप टू 100% की भी मॉर्गेज ले सकते हैं. ओवरसीज पाकिस्तानी की जब बात होती है तो पाकिस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, बाकी लोग भी ओवरसीज पाकिस्तानी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया कहते हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की इकोनॉमी में या पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आती है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है उनका. ओवरऑल अगर फिगर्स को देखा जाए या इस पर रिसर्च की जाए तो 10 से 12 बिलियन डॉलर इस साल में ओवरसीज पाकिस्तानी के थ्रू जो उनकी रेमिटेंसेस आएंगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स, उसमें से तकरीबन 30% यानी 10 से 12 बिलियन डॉलर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट होगा. अब ये जो 10 से 12 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट होगा, इससे पहले एज सच इस तरह की फैसिलिटेशन नहीं थी जहां पे एक तो आप उसको इजीली रेमिट कर सकें और दूसरा यहाँ पे वेरीफाई कर सकें प्रॉपर्टीज को जिन प्रॉपर्टीज में आप वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं. सो थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट या रोशन अपना घर या ये जो SPP का इनिशिएटिव है, this is a great opportunity to streamline the whole process. This is a great focus. गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस रहा है रियल एस्टेट के सेक्टर के ऊपर. अभी तक जो गवर्नमेंट यहाँ पे इनिशिएटिव ले चुकी है रियल एस्टेट के सेक्टर को स्ट्रीमलाइन या ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसमें बायलॉज सिटीज के इनके ऊपर बड़ा काम हुआ है. इस्लामाबाद के न्यू बायलॉज आए हैं, इसी तरीके से दूसरे जितने भी सिटीज हैं उनकी मास्टर प्लानिंग या बायलॉज की बात हो रही है, काम हो रहा है. रेरा हैज बिकम एन एक्ट, दो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू भी हम बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अभी ये एक एक्ट बन चुका है. प्राइम मिनिस्टर साहब का कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज है, उसके अंदर काफी सारे इंसेंटिव्स हैं. फिक्स टैक्स रिजीम दी डेवलपर्स को प्राइम मिनिस्टर साहब ने, दैट इज बहुत अच्छा इंसेंटिव है डेवलपर्स के लिए. रोशन डिजिटल अकाउंट जिसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स भी हैं, रोशन अपना घर, इस तरह के काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं. दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. अभी डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड या डिजिटल मैपिंग ऑफ लैंड की एक बात चल रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्लामाबाद में इसको लॉन्च किया है. बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा, मैं इसको बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा. देन वी टॉक अबाउट द रीट्स के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो हैं, उसके अंदर पहले एक वो रेंटल रीट्स की बात होती थी, अब देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शन एंड देन देयर आर टॉक्स अबाउट डिजिटल रीट्स व्हिच आई बिलीव is the most sophisticated or advanced concept in the world today.
इफ डिजिटल रेट्स आते हैं उसके बारे में मैं छोटी सी बात कर लूंगा। लेकिन ये वो इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, एंड रोशन अपना घर perfectly aligns with the Prime Minister's government's vision to streamline real estate sector, at the same time bring in more investment, और जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ रही है रियल एस्टेट के अंदर पाकिस्तान में, उसको भी बेहतर तरीके से कैसे अच्छे चैनलाइज किया जाए प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर। क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है ओवरसीज का, 70% जो आज कंप्लेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पोर्टल पे वो ओवरसीज की रियल एस्टेट रिलेटेड है। रियल एस्टेट बहुत बड़ा इशू है ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी और पाकिस्तान का भी। आज कोर्ट्स में तकरीबन 60% केसेस आर टू डू विद रियल एस्टेट। तो हम एक तरफ बहुत आगे जा रहे हैं, एज ए सेड कि मोस्ट एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखना है कि जो स्ट्रक्चरल हमारे जो रियल एस्टेट का ओवरऑल कंडक्ट है या बिजनेस है, वो जिन चीज़ों पे डिपेंडेंट है वो कितना अच्छा है। तो वो एक चैलेंज है जो मैं चैलेंजेस के सेक्शन में उस पर बात करूंगा। ये तो हो गए इसके मोटे मोटे फीचर्स हैं जो रोशन डिजिटल अकाउंट या रोशन अपना घर के। एंड देन वी टॉक अबाउट जो पोटेंशियल या इंसेंटिव्स, इसके बारे में पहले भी बात हुई कि ओवरसीज के लिए इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज एंड इंसेंटिव्स हैं। एक तो हमने बात की कि वो जो रेमिटेंसेस यहाँ पे बेचते हैं वो वापस भी जा सकती हैं। वो अभी आसिफ साहब ने मेंशन किया कि इफ दैट बिकम्स इनकम देन इन दैट केस उसके बारे में वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इनकम टैक्स लगता है अगर, तो इन दैट केस व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, वो क्या करेंगे उससे ओवरसीज पाकिस्तानी। कैपिटल गेन्स टैक्स की बात हुई कि कैपिटल गेन्स टैक्स जो उसके ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा, वो भी मैं देखना चाहता हूँ। वो भी मेरा क्वेश्चन है सलीमुल्लाह साहब से। टैक्स रजीम की सलीमुल्लाह साहब ने बात की कि 1% एट द टाइम ऑफ परचेज एंड 1% एट द टाइम ऑफ सेल। दैट मेक्स इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द टैक्सेशन परस्पेक्टिव अगेन, कि टैक्सेशन का इसमें यहाँ पे अगर इफ इट्स डबल टैक्सेशन नहीं होती और कैपिटल गेन्स टैक्स का इशू नहीं है तो फिर तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये टैक्सेशन के परस्पेक्टिव से। इसमें कुछ चीज़ें मेंशन हुई कि काफ़ी सारे और एवेन्यूज भी खुलेंगे अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, इंश्योरेंसेज और बाकी चीज़ों की भी बात हुई। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तानीज स्पेशली जो उनकी सेकंड या थर्ड जनरेशन ओवरसीज पाकिस्तानीज की, उनका जो कनेक्ट इस वक्त थोड़ा सा सम टाइम वो पाकिस्तान के साथ विद टाइम वो कम हो जाता है। वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से वी कैन री-एस्टैब्लिश दैट कनेक्ट एज वेल। एंड देन हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो मोर्गेजेस नहीं थी, अब उसकी तरफ पाकिस्तान का ट्रेंड चला है। बैंक्स के लिए तो ब्रेड एंड बटर होता है बाहर के मुल्कों में एज फार एज मोर्गेजेस आर कंसर्न, सबसे बड़ा बिजनेस मोर्गेजेस का होता है, तो वो अब पाकिस्तान में आती हैं तो उससे पूरे के पूरे हाउसिंग सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा लिया जा सकता है। और उस वो फ़ायदा लेने के लिए कुछ चैलेंजेस जो हैं, जो कि हर्डल्स हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लूँगा। कुछ चैलेंजेस की बात तो इससे पहले की आसिफ साहब ने मेंशन किया, बड़ी डिटेल में उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने 5 मेन हेडिंग्स के नीचे उन्होंने चैलेंजेस मेंशन किए। लैक ऑफ अवेयरनेस है, लीगल जो चैलेंजेस आएंगे, कैपेसिटी हमारी है कि नहीं है। यस, वी डोंट हैव द ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स हियर इन पाकिस्तान टू डील विद सच इनिशिएटिव्स। टैक्सेशन की बात हुई, वेरिफिकेशन की बात हुई। एक और बहुत बड़ा चैलेंज है और इस बारे में मेरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी बात हुई है, सलीमुल्लाह साहब से भी बात होती रही है कि जब ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और अभी जब हम देखते हैं कि उनका जो रियल एस्टेट की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है 10 से 12 बिलियन डॉलर, जैसे मैंने कहा कि इस कैलेंडर ईयर में आएगा, उसमें जो चैलेंजेस या इश्यूज या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका सलूशन क्या है। जैसे आपने भी जनरल साहब कहा कि होलिस्टिकली अगर हम इसको डील करें तो दैट चैलेंज वुड बिकम अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म द होल रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोटेंशियल है, अगर बीट इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, किसी भी लिहाज से आप देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 2 करोड़ घर चाहिए हमें अगले 10, 15 या 20 सालों में
एंड 2 ट्रिलियन की वैल्यू है उनकी, $750 बिलियन की एलाइड इंडस्ट्री यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल बन जाता है अगले 20 सालों की जो रिक्वायरमेंट है हमारी। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ जॉब्स आ सकती हैं रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और एलाइड सेक्टर के अंदर। बहुत बड़ा इसके अंदर पोटेंशियल है। जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ करके हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नीचे लाई जा सकती है, इंपोर्ट कम की जा सकती है, एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है, महंगाई कम की जा सकती है। सो बहुत बड़ा सेक्टर है और उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल हमने इंशाल्लाह रियलाइज करना है। और उसमें इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं दे प्ले अ ग्रेट रोल। लेकिन उसमें जो चैलेंजेस हैं, अगर उनको होलिस्टिकली हम इस को देखें कि ये जो इनिशिएटिव है इसको किस तरीके से ये ओवरऑल इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर कर सकता है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज पाकिस्तान हैज इज कि जब हमारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, वो आया कि उनके पास यूनिट वेरिफिकेशन का या उस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन का कुछ सिस्टम है या नहीं है। यानी कि जो प्रॉपर्टी या एसेट वो परचेज कर रहे हैं या जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आया कि उसकी वेरिफिकेशन का कुछ सिस्टम है या नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है। ये मैल प्रैक्टिसेस में भी आ जाता है, ये बाकी भी जितने भी आपके जो मैं 4 मेन हमेशा प्रॉब्लम्स कहता हूँ रियल एस्टेट के पाकिस्तान में, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ रेगुलेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड देन द रिजल्ट इज मैल प्रैक्टिसेस। ये इन चारों में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स या डिजिटल मैपिंग ऑफ लैंड पासेस ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद में जो अभी अनाउंस किया है, now that could be a revolution, that could be a revolutionary change जो कि यूनिट वेरिफिकेशन के लिए भी एंड एट द सेम टाइम प्लानिंग एंड रेगुलेशन के लिए भी हो सकती है। व्हाट डज दैट मीन कि जब भी कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में या ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में कोई भी रियल एस्टेट का एसेट खरीदे, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करे, उस वक्त उसके पास एक सिंपल प्रोसेस हो। और अगर ये डिजिटल मैपिंग या डिजिटलाइजेशन हो सकती है तो दैट वुड बिकम एन ऑनलाइन प्रोसेस, व्हिच मींस कि ऑनलाइन वो वेरीफाई कर सकता है कि ये जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ ये ठीक है, ये अप्रूव्ड है, इसके ऊपर कोई लिटिगेशन चार्जेस या इश्यूज तो नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच आई बिलीव कि आरडीए के लिए भी होगा, ये रोशन अपना घर के लिए भी होगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो कि व्हाइट लिस्ट में है, ये एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, उस अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में जितने भी यूनिट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, आया कि वो भी अप्रूव्ड हैं कि नहीं है, या अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड लेआउट प्लान या अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान क्रिएट किए जा रहे हैं कि नहीं है। प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे आपके पास प्रेसिडेंट्स होंगे जहां पे ऐसा नहीं होता। सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। और इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने कोई बहुत बड़ा हमारा कोई इशू नहीं है। एक तो यही है कि अगर ये डिजिटल मैपिंग और ये डिजिटलाइजेशन जो है इसके थ्रू एक्सेस अगर दी जाती है एंड यूजर को और वो इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। अदरवाइज रेगुलेटिंग अथॉरिटीज को हमें स्टेक होल्डर बनाना चाहिए कि वो भी स्टेक होल्डर बने इस पूरे प्रोसेस में, विच इंक्लूड्स द वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन यूनिट्स। दूसरा इसके अंदर जो चैलेंज आ सकता है, अभी जैसे मैंने पहले भी बात की कि हम डिजिटल रीट की बात कर रहे हैं। अच्छा, डिजिटल रीट इज लाइक दुबई इज वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट कि जी टोकनाइज्ड यूनिट्स या फ्रैक्शनल यूनिट्स, उनको कैसे वो ट्रेड हों ब्लॉकचेन के ऊपर, एंड अभी तक उन्होंने इसको लॉन्च नहीं किया। लेकिन हम पाकिस्तान में मोस्ट एडवांस्ड ये कॉन्सेप्ट्स हैं रियल एस्टेट के अंदर कि आप एक यूनिट है जिसकी प्राइस है 1 करोड़ रुपया, तो आप उसके 100 यूनिट्स फ्रैक्शनल यूनिट्स बना देते हैं 1 लाख के, और उसमें 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 100 इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। ये अभी तक दुनिया में एज सच प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुए, बट हियर इन पाकिस्तान डिजिटल रीट वुड अलाउ अस टू डू दैट। इवन नया पाकिस्तान हाउसिंग सर्टिफिकेट कैन बिकम सॉर्ट ऑफ लाइक टोकनाइज्ड यूनिट्स का मैकेनिज्म। जब हम इतने एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं, डिजिटल मैपिंग हो रही है जिसकी वजह से इंशाल्लाह लैंड रजिस्ट्री सिस्टम भी ऑनलाइन हो सकता है हमारा। इसी तरीके से रेरा अगर एक एक्ट उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करें तो वो जितनी भी हमारी यहाँ पे कमियां हैं कि रियल एस्टेट एजेंट्स की लाइसेंसिंग होनी है, रिकॉर्ड कीपिंग होनी है, डेवलपर्स रेगुलेट होने हैं, एस्क्रो अकाउंट्स आने हैं, वो सब कुछ भी आ सकता है। उसके लिए ये जो हमारी होलिस्टिकली अगर हमने इसको डील करना है तो स्ट्रक्चरल लेवल के इश्यूज को हमें ख़त्म करना चाहिए, और उसमें बड़ा ज़रूरी है कि हम डिजिटल मैपिंग के थ्रू ऑनलाइन लैंड वेरिफिकेशन सिस्टम या ऑनलाइन प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च करें, और रेरा को जल्द अज जल्द हम लोग इम्प्लीमेंट करें। ये जो SBP स्टेट बैंक का इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव हैं,
जितने भी बैंक्स इसके अंदर हिस्सा डाल रहे हैं, ये सारे का सारा जो इस वक्त सारी की सारी एफर्ट है, इसको बड़ा मीनिंगफुल बनाया जा सकता है if we implement RERA in its true spirit as soon as possible here in Pakistan for the estate agents and developers to streamline the whole process. ये मेरी suggestion भी है. कुछ questions हैं, अगर मैं जल्दी से ये questions भी कर लूँ, उसमें ये questions सलीमुल्लाह साहब भी आंसर कर सकते हैं या कोई और हमारे जो यहाँ पे साथ में attendees हैं जो उनमें उनके पास अगर इसका आंसर हो. गवर्नमेंट की एक मार्कअप सब्सिडी स्कीम है इस वक्त मॉर्गेजेस के लिए, तो आया कि वो भी ओवरसीज पाकिस्तानीज अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते. दिस इज टू डू विद द मॉर्गेजेस. जो कैपिटल गेन्स है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, इज कैपिटल गेन्स टैक्स्ड और नॉट टैक्स्ड. डबल टैक्सेशन की मैंने भी बीच में बात लिखी हुई थी, आसिफ साहब ने भी मेंशन की कि डबल टैक्सेशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है. आई अंडरस्टैंड कि द प्रिंसिपल अमाउंट इज बेसिकली रिपेट्रिएटेड. In that case, as long as you show it to in your country that you know that amount is being invested somewhere else, be it Pakistan, then if you take that investment back and if it's already been taxed, तो वो दोबारा tax नहीं होगी. But obviously then there could be a question that how about the capital gains? And as far as the capital gains are concerned, if they are here in Pakistan for 3 years, then obviously there should be some sort of, वहाँ पे भी, जैसे मैं यूके की बात करता हूँ, मैं यूके में ज़्यादा टाइम गुजारा है, तो वो पूछेंगे जी कैपिटल गेन्स जो आपने वहाँ पे यहाँ से जो पैसे लेके गए हैं, यहाँ से इनकम लेके गए हैं, वो बनाए हैं, वो 3 साल जो उधर पड़े हुए हैं वापस आप कब लाएंगे, और उसके ऊपर फिर कैपिटल गेन्स टैक्स होता है 18% से 28% के बीच में. ये यूनिट वेरिफिकेशन सिस्टम जो है, लेट्स से एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, बैंक की वेबसाइट पे लगा हुआ है, लेकिन उस अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में बीट हॉरिजेंटली या वर्टिकली अगर एक यूनिट जो बना है वो अप्रूव्ड नहीं है, तो इन दैट केस उसकी वेरिफिकेशन का क्या सिस्टम होगा. नया पाकिस्तान हाउसिंग सर्टिफिकेट्स जो हैं या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स जो हैं, आया कि ये इन्वेस्ट होते हैं रियल एस्टेट के अंदर कि नहीं होते. वो उन्होंने बात की थी 100% मॉर्गेजेस की, जिसमें उन्होंने 15% की बात की कि वो जो डिपॉजिट होता है अगर वो ऑलरेडी रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर है तो उसको किस तरीके से लियन मार्क, तो उसकी अगर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें. ऑफ प्लान मॉर्गेजेस की उन्होंने बात की अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें यह है कि अपार्टमेंट्स का भी है, स्पेशली अपार्टमेंट्स हियर इन लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पे तो when apartments are even constructed to sometime जो regulating authority के थ्रू ये ट्रांसफर नहीं होते थे, उनके लिए जो इन्होंने मैकेनिज्म ऑफ प्लान के लिए इंट्रोड्यूस किया उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. ये मेरे पास 5 से 6 क्वेश्चन हैं. थैंक यू वेरी मच सर, मेरे पास बस आज यही था. थैंक यू शफीक साहब, बहुत शुक्रिया. दिस वाज द रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव. और जो आपने जो बात की थी कि होलिस्टिक अप्रोच उसमें कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, और मेरे ज़हन में तो सबसे पहले जुडिशरी आता है. तो हमने कहा कि 70% जो लिटिगेशन के जो रियल एस्टेट के केसेस ही हैं, तो कोई ये एक छोटा डिस्प्यूट है बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, ये कोई क्विक डिस्पोजल टाइप कुछ कोर्ट्स होनी चाहिए और समथिंग. Then you talked about multiplying effects. इसमें यह है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की आपने बात की, चैलेंजेस की बात की. एक बहुत अच्छी बात जो आपने रीइटरेट की है कि रियल एस्टेट सेक्टर कैन बी अ टूल टू इकोनॉमिक रिससिटेशन ऑफ पाकिस्तान, which is very important. And then digitization of land record, it is certainly going to be a revolutionary step. और ये हो जाए तो कितनी हमारी बातें खत्म हो जाए. Finally, I registered your point that RERA, Real Estate Regulatory Authority को जितनी जल्दी हो सकता है इसको इम्प्लीमेंट और फंक्शनल करना चाहिए. We have noted down your questions. मैं इस पे अभी आएंगे हम और सलीमुल्लाह साहब से बात करेंगे. मैं अभी I'll request Mr. Fareed Alam, please take the floor, sir. अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को. ओके. वेरी मच. थैंक यू जनरल साहब. अस्सलाम वालेकुम fellow speakers, especially the delegates who have been attending and listening to this webinar. और वो पेशेंट अभी तक तो उनकी लिस्टिंग चल रही है. जब क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा तो दे विल इंशाल्लाह एंजॉय एंड ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाएंगे. काफ़ी टेक्निकल बातें हो रही और मेरा बैकग्राउंड तो
प्रॉपर्टी से डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हमारा चेयरमैन जो है उनको भी बहुत शौक है और हमारे भी एज अ ग्रुप हमारे रियल एस्टेट में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और क्यों ना हो, जो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके अंदर ये जो इस इकोनॉमिक टीम का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अभी तक जो हम कर पा रहे हैं इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का पैकेज और ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म है वो इट्स लार्जली बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। शायर ने तो कहा था कि सिर्फ अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना जहां में कोई नई बात नहीं। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है आज नई बातें कर रहे हैं। ये रोशन, ये जो मेरा घर मेरा पाकिस्तान, रोशन अपना घर, ये नई बातें हैं जो कि बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग द पैनलिस्ट ये फर्स्ट टाइम हो रही है हमारे साथ। हम जो बात अभी की शफीक अकबर साहब ने और बाकी लोग मेरे कोलीग्स ने, ये ऐसी चीजें हैं कि वी हैव नॉट हर्ड। हमें जो फोरक्लोजर लॉज और ये वो, मैं बैंकर रहा हूँ बहुत साल, तो ये वाली चीजें हम बाकी दुनिया से देखते थे कि कैसे कैसे होंगी, लेकिन अब वी आर आई मीन विटनेसिंग आवरसेल्व्स कि ये सब कुछ हो रहा है। मैं अपनी जो डिस्कशन है इसको थोड़ा स्लाइड से हेल्प लूंगा ताकि जो यंगस्टर्स हैं जो ये सुन रहे हैं हमारी बातें, इतनी मेरी कलरफुल प्रेजेंटेशन तो नहीं है जैसे कि आसिफ रियाज साहब की बड़ी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन थी, बट मैं अगर एडमिनिस्ट्रेटर मुझे अलाउ कर दे तो मैं लगा लूं अपनी छोटी सी प्रेजेंटेशन और फिर हम इसको आगे चलाएं। जी जी लगाइए प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, हम अभी आ गए हैं। ये आपको मेरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही है। कैन वी असिस्ट यू इन दिस? जी जी, बोथ शेयर ऑप्शंस। स्क्रीन करें, शेयर स्क्रीन। मैंने शेयर स्क्रीन पे मैं तो अपने आप को देख सकता हूं, लेकिन आप देख लें, वरना फिर मैंने भिजवाई भी है, वहां से भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से लगा, आप लगाएंगे। इन द मीन टाइम जब वो लगा रही है तो मैं अपनी बातें जारी रखता हूं। प्रेजेंटेशन नजर आ रही है जी फरीद साहब, प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। ओके, तो अब इसको थोड़ा रन कर लें कि एडमिनिस्ट्रेटर ही रन कर ले तो और आसानी रहेगी, वरना मेरे पास सब कंट्रोल नहीं है। नहीं, हम रन कर रहे हैं, डोंट वरी। आप बोलते जाइए, आप नेक्स्ट बोलते जाइए, काम करते जाइए। नेक्स्ट प्लीज। तो हमने जो आज डिस्कशन की इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो मोटी बात है, जो हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए बड़ी फख्र की बात भी है कि नई स्कीम है आरडीए अकाउंट, लेकिन इसके अंदर माशाल्लाह बड़ी हेल्दी किस्म का, और जो यंगस्टर्स हैं वो ग्राफ्स में और जो इंटरैक्ट करना चाहते हैं इस वाली प्रेजेंटेशन और वेबिनार में, तो दे कैन सी के हमने विद इन 1 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक की और इस गवर्नमेंट की काविश थी और कामयाब हुई कि 2 बिलियन से ज्यादा हमने अचीव कर लिया आरडीए में नंबर। जो डिस्टर्बिंग या जो अभी तक ये खैर स्कीम भी बहुत नहीं है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट वाली जिसको मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं, वो वाला पैसा जो आ रहा है पाकिस्तान में आरडीए में, वो ज्यादातर अभी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स और इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में ज्यादा जा रहा है, एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। रियल एस्टेट में अभी खैर नया एस्पेक्ट है, बट इसके अंदर भी आसिफ साहब एंड माय others will bail me out. There are a lot of people who are eyeing on this opportunity and are in the stage of अभी पहली जो स्टेज होती है डिस्कशन की, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की और इसको डाइजेस्ट करने की। गुड थिंग इज के अबाउट 2000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में रजिस्टर हो गए। अगर इसके अंदर एक्सपेक्टेड हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो $3 बिलियन से ज्यादा की है। रीट्स हमारे यहाँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिस तरह हम यहाँ तो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन जो नाजरीन जिनको इस बात का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो देखिए कोई भी बंदा शेयर्स जो मैं कंपेयर कर दूं कि आप 50,000 या 50 मिलियन वट एवर अमाउंट से आप अकाउंट खोलना चाहें तो कोई इस पे कम या ज्यादा का मसला नहीं है।
लेकिन जब आप रियल एस्टेट का जो बूम पूरी दुनिया में आता रहता है बार बार और है रियल एस्टेट के अंदर, तो उसके अंदर अगर आप एक्सपोजर लेना चाहें तो आपको यू हैव टू हैव सो मच मनी कि जिससे आप अच्छी जगह पे अपना कोई इन्वेस्टमेंट लें। तो यानी इसको अब आप 5 मरले 10 मरले किनाल, तो अगर आप के पास 5 मरले खरीदने की जगह नहीं है तो वो रीट्स के जो मॉडल हैं वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप यूनिट्स खरीदें। 2 तरह की रीट्स होती हैं, जिस तरह एक डेवलपमेंट रीट है और एक रेंटल रीट है। पाकिस्तान में ये डॉल्मेन मॉल की बहुत शानदार एक पाकिस्तान का प्राइड है, एक बहुत शानदार ये मॉल, बट अभी वो रेंटल रीट है, लेकिन वो इतना अभी तक वो शाइन आउट नहीं कर सका जितने की उम्मीद थी, और होगा इंशाल्लाह। जो अच्छी चीज है, जिस तरह मैंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है और ये जो उससे ऑप्टिमिज्म है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरे अगर बॉटम ऑफ द राइट साइड पे आप देखें तो सीमेंट सेक्टर जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए एक बहुत बड़ा एक जुज है, वो उसकी जो डिस्पैचेस हैं वो हाईएस्ट एवर पाकिस्तान ने अचीव की हैं। मैं साथ साथ जिस तरह मेरे फेलो स्पीकर्स ने भी ये किया कि वो साथ साथ रिस्क और रिवॉर्ड बताते जा रहे हैं, लेकिन जो पॉलिसी और जो हम कुछ देख रहे हैं ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है। और अब जो मैं रिस्क बताने छोटा सा जा रहा हूं वो ये है कि ये ऐसी चीज हो रही है कि जिससे कोयले की प्राइस की वजह से सीमेंट की प्राइस बढ़ गई है, लेकिन ये इनिशियल टीदिंग इशू है जो थोड़ा सा आया, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी कोयले की, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, तो जाहिर है सीमेंट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, और कंस्ट्रक्शन के अंदर सीमेंट और स्टील की एक वैल्यू है, तो इसलिए। बट जो अच्छी बात है, साथ साथ मैं दोनों पॉइंट बताता जाऊं कि वो ये जो प्राइस की इंक्रीज है, इट इज नॉट फिनोमिना रिलेटेड टू पाकिस्तान, ये इंटरनेशनली ही कोयले की जब एनर्जी की प्राइस बढ़ रही है, कोयले की बढ़ रही है, तो हमारे भी सीमेंट की प्राइस बढ़ी है, जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर थोड़ा सा जो ऑप्टिमिज्म है वो थोड़ा सा एक आधे हफ्ते, महीने, 2 महीने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जरूर गई है, तो इससे थोड़ा सा इंपैक्ट है मार्केट में। एक हमने ये बहुत बिजी स्लाइड है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे, लेकिन ये है कि ये हमने इसको बहुत सारी कॉमनैलिटीज हैं। एक है जिस तरह सलीमुल्लाह साहब ने कहा था कि विद लियन है और एक विदाउट लियन है। जो लियन वाला काम है, जो मैं अपने ऐसे लोग जो फाइनेंस को ज्यादा पसंद करते हैं ये बात समझना, देखिए अगर आप पाकिस्तान में आप एक्सपैट्रिएट हैं, आपने पार से भेजा पैसा, लेकिन आपको शक है या आपको ये डाउट है कि डॉलर की पैरिटी यहाँ चेंज होगी, तो आप अपने डॉलर पे ही रखें पैसे और उसके अगेंस्ट लिए रखा के आप जो इन्वेस्ट करते हैं इनटू प्रॉपर्टी, तो वो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आपका जो पैसा है वो डॉलर में पड़ा हुआ है, डॉलर में रिटर्न कमा रहा है, 7% तक स्टेट बैंक आपको दे रहा है, और 11% देता है रूपी टर्म्स में और 7% वो डॉलर टर्म्स में दे रहा है, तो उसको आप लियन रखवाएं। ये अब जरा गुर की बात, और आप उससे प्रॉपर्टी खरीदें तो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। और अगर हमारी तो ख्वाहिश है एज अ पाकिस्तानी के डॉलर ऊपर ना जाए, और जो कभी कभी मार्केट फोर्सेस ऊपर नीचे कर देती हैं, बट जिसने 160 पे ये काम किया और अब थोड़ा महंगा भी हुआ, तो जिसने विद लियन काम किया उसका फायदा है ज्यादा कि वो अपने डॉलर को डॉलर में रख रहा है, और वो दोनों के बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मिल रहे हैं उसको, प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी मिल रही है और डॉलर के अंदर जो यहाँ रुपी के अंदर गिरावट आ रही है उसका भी उसको नुकसान नहीं हो रहा। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने थोड़ी कंपेयर कर दिया है रियल स्टेट को ग्लोबल। अगर हम स्टेज पे देखें तो पाकिस्तान जो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टॉप पे आ जाए, प्रॉपर्टी अफोर्डेबिलिटी का इंडेक्स, कि हमारे यहाँ अभी जो कंपैरिजन चल रहा है हम कहाँ प्लेस्ड हैं। इसी तरह अगर राइट साइड पे आए तो प्रॉपर्टी प्राइस टू मीडियन इनकम रेशो एक हमने बनाई आसानी के लिए आप लोगों के, कि अगर एवरेज यहाँ प्राइस प्रॉपर्टी की लेट्स से 35 लाख रुपए हो और आपकी पर कैपिटा इनकम पाकिस्तानियों की इस वक्त $1400 देर अबाउट है, तो समझे अगर 2,40,000 हो तो ये हम लोग प्लेस्ड हैं इस वक्त एट 12.5 और देर अबाउट, जो कि
राइट साइड पे प्रॉपर्टी प्राइस में हमने शो किया आपको। फिर रेंटल यील्ड्स के ऊपर देख लें हम तो पाकिस्तान कहाँ प्लेस्ड है, खासा कंफर्टेबल है कि हमारी रेंटल यील्ड्स भी बहुत स्ट्रांग हैं। हमसे नीचे बहुत सारे मुल्क हैं, ऊपर हमसे सिर्फ एक ही है। लोन टू वैल्यू एक रेशो निकाल दी है हमने कि स्टेट बैंक अभी जो आपको ये सारी मदद दे रहा है इसमें हम कहाँ खड़े। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये कंपैरिजन है थोड़ा कि जो ओवरसीज हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान से गए हुए हैं उनको अगर ये देखें कि वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, तो हमारी अगर पिछले 6 महीने की हम एवरेज लें तो कराची में क्या रेट आया है और बाकी जगहों पे क्या रेट रहा है लाहौर में। और लाहौर कराची में हमने थोड़ा सा ये नाजरीन के लिए इंटरेस्ट के लिए ये बता दिया कि लेट्स से जिस तरह कराची में गुलशन इकबाल खासा प्राइस बढ़ी है बनिस्बत और जगहों पे। एक कमर जलालवी का मुझे शेर याद आ गया, उन्होंने कहा था कि कब मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो गुलशन इकबाल का जिक्र कर रहे होंगे, उनका घर नहीं बन पा रहा होगा। तो वो ये गुलशन इकबाल आज भी पिछले 6 महीने में मैं देख रहा हूँ कि प्राइस में ज्यादा बढ़ा। तो कमर जलालवी साहब मरहूम आज खुश होंगे कि उनका फैसला सही था, वहां प्रॉपर्टी लेने का किसी ने गवारा नहीं किया। लेकिन हमारा स्टेट बैंक गवारा कर रहा है, आप आए और जहां मर्जी लें और बैंकर्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे। अच्छा, ये हो गई कंपैरिजन जस्ट टू शो हाउ प्राइसेस आर मूविंग एंड कहां क्या प्राइस है। तो जिस तरह कराची में 12,500 जैसी है, लाहौर में 7,000, ये एवरेज पर स्क्वायर फीट जो हमारे मिल रही है चीजें उसकी बात है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे जो प्रॉमिस है वो कहां से आ रहा है। एक तो ये है कि हमारे अभी आपने देखा होगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो डेवलप अप्रूव हुए गवर्नमेंट की तरफ से वो 9 हैं। तो 9 के अंदर जब इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं उसके साथ आबादियां बनती हैं, तो ये सारी चीजें जो रियल स्टेट की अंदर जो ऑप्टिमिज्म की मैं बार बार बात करूंगा वो इट आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द फैक्ट दैट द इकोनॉमी इज टेकिंग ऑफ अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे जो इकोनॉमिक जोन्स के साथ हमारी जो आबादियां डेवलप होंगी उसमें हमारे ओवरसीज भी और लोकल लोग भी फायदा उठाएंगे। आपको ये बड़ी जान के बाद खुशी होगी कि एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान में 5 लाख किलोमीटर की हमारी रोड्स नेटवर्क है, विच इज ग्लोबली एक खासा सिग्निफिकेंट टॉप 10 लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स ग्लोबली के अंदर ये शुमार होता है। तीसरा पॉइंट ये कि अर्बनाइजेशन बढ़ रही है हर डेवलपिंग कंट्री में और पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। अब आप देखें कि जो हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन है वो उस वक्त 44% है। अगर मैं 10 साल पहले से इसको कंपेयर कर दूं तो इट यूज्ड टू बी 37%। तो हमारे जो लोग लंदन में बैठे हैं या स्पीकर्स या हमारे जो सुन रहे हैं उनके लिए और बहुत से लोगों के लिए ये बात जब डिस्कशन होती है तो अगर इसको सब्सटैंशिएट कर दिया जाए किसी नंबर से तो वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल ज्यादा हो जाती है। तो अर्बनाइजेशन हम समझते भी हैं, देखते भी हैं कि हो रही है, बट जिस पेस पे हो रही है वो ये कैप्चर कर रही है फिगर्स। एक जो बड़ी जहां अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि हमारी मॉर्टगेज टू जीडीपी इज परहैप्स द लोएस्ट इन रीजन। क्या ये पूरी दुनिया में लोएस्ट होगा, लेकिन अब इसको टैप करने का टाइम आया है। हमारे यहाँ आपको पता है कि 0.2% की फिगर है, विच इज नाइदर हियर नॉट देयर, राउंडिंग ऑफ भी नहीं हो सकती। लेकिन अब आप इसको कंपेयर कर लें समझने के लिए नाजरीन कि 3% है ये रेशो फॉर बांग्लादेश और 7% इंडिया है, और वेस्ट को तो छोड़ ही देना, तो वेस्ट तो 50, 60, 100% हो। अब आप आ जाए कि जो अच्छी बात हुई है, स्टेट बैंक ने सिर्फ बातें नहीं की, काम भी करके दिखाया और बैंकर्स को उन्होंने मूव कर दिया इस दफा। वरना कॉर्पोरेट लैंडिंग के बाद इस छोटे काम में और कंज्यूमर में आते हुए शाई ऑफ कर जाते थे बैंकर्स। तो अभी आप देखें कि इस वक्त 55 बिलियन रुपीस इस वक्त कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चले गए हैं, वो विच इज हाईएस्ट एवर एनुअली। तो अगर हम इस वाले नंबर को देखें और इसके बैक पे जो कारफर्मा चीज है
कि स्टेट बैंक ने मैंडेटरी कर दिया है बैंकर्स के लिए कि प्राइवेट सेक्टर को जो आपने प्राइवेट लैंडिंग जितनी भी करनी है गवर्नमेंट को छोड़ के, उसका एटलीस्ट 5% आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देना। फिर आज बात हुई डिजिटलाइजेशन और मैपिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की। ये एक पायलट प्रोजेक्ट आज से 15 साल पहले भी हुआ था, बट आई थिंक नाउ द गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस और इसके अंदर मूवमेंट तेज हो गई है। जो हमारी इस वक्त 19.2 मिलियन की हाउसिंग यूनिट्स की एक जो डिमांड है, उसके ऊपर सब्जेक्टिव नंबर्स हैं, लेकिन ये है कि जो काम करने वाला एक है कि जो हमारे पास है और एक है जो रिक्वायरमेंट है। तो हमारे जो अभी हाउसिंग का डाटा है वो ये कहता है कि जो अभी हमें 5 मरले के भी अगर हम बनाएं, दो स्टोरीड घर, तो उसकी एक नंबर है, मेरे ख्याल से वो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में कवर करूंगा अगर किसी को इंटरेस्ट हुआ कि हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 36.6 मिलियन हाउसेस की है, और अभी हमारे पास जो ये नंबर मैंने आपको दिया 19.2 का, ये हमारे पीबीएस जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये उसका नंबर है कि हमारे यूनिट्स जो हैं बने हुए वो क्या है। मैं एक तो और बातें करके कंक्लूड करूंगा कि एक तो जो मेरे से पहले स्पीकर्स ने बात की कि क्या इट्स ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टेक होल्डर। ये सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी तो इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और जो उनकी ख्वाहिश है अल्लाह करे वो पूरी हो रही है, लेकिन जो इससे पूरी इकोनॉमी जो मूव कर रही है, जो लार्जर पिक्चर अगर मैं कैनवस पे देखूं तो इस सारी अपॉर्चुनिटी में एवरीबडी इज अ विनर। इस जिक्सॉ पजल में कौन कौन कैसे कैसे डालेगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू और कैसे अपना रोल प्ले करेगा, दैट इज समथिंग टू बी सीन। जो इन्वेंट्री का चैलेंज है, जो मुझसे पहले एक स्पीकर मेरे ख्याल से आसिफ भाई ने कहा, वो ये है कि एक्सपैट्रिएट्स के पास पैसे हैं, उनको लिमिट मिल जाएगी, उनके पास इक्विटी इन हैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह है, बिकॉज पाकिस्तानी रुपए की कदर इतनी नहीं रही जितनी पिछले सालों में होती थी, तो उससे उनके पास यहाँ उनके पास पैसा तो है, लिमिट भी मिल जाएगी, तो उनको मतलब की प्रॉपर्टी अभी उसकी इन्वेंट्री आहिस्ता आहिस्ता बनेगी, डेवलप होगी। और दूसरा ये कि थोड़ा सा जो रिस्क हल्का सा आया हुआ है आजकल, वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ी बढ़ी हुई है, लेकिन जैसे मैंने कहा इट इज नॉट रिलेटेड टू पाकिस्तान ओनली, वो पूरी दुनिया में इस वक्त स्पाइरल कमोडिटीज के बढ़ने का आया हुआ है। जो एक बात आई कि जो प्री अप्रूव्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक अच्छी चीज है, बट वो एक आटे में नमक के बराबर होगा। तो प्री अप्रूव्ड के अंदर वो उनको अटेंशन डाइवर्ट कराना, इट इज लवली कॉन्सेप्ट, बट मेरा ख्याल से जो लोग उस इलाके से हैं उनके लिए तो सही है, बट आप देखें कि अभी हमने जो स्ट्राइड्स या जो हमने जो एरिया कवर करना है उसके अंदर ये प्री अप्रूव्ड वाले में बहुत सिलेक्टिव हो जाएंगी चीजें, बट नेवरदलेस इसका बेनिफिट होगा सिस्टम को भी, और लोग जो डिसिप्लिन होना चाहेंगे उनको इंसेंटिव जब मिलेगा टू बिहेव, हमारे डेवलपर को, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, तो आई थिंक इट विल बी अ लवली इंसेंटिव फॉर देम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिस्टम, और उससे बेहतरी के असर पैदा होंगे। तो विद दैट आई कंक्लूड माय स्मॉल प्रेजेंटेशन फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच जॉन सर। थैंक यू फरीद साहब, बहुत शुक्रिया। यू नो कहते हैं कि the player doesn't see the whole game, it is the spectator who sees the whole game, so that's why we included you in as a panelist, because you could see what is happening to the real estate sector. आपने बड़ा शायराना अंदाज में ये कहा था, और कमर जलालवी का आपने शेर पढ़ा था कि पहले, लेकिन मिसरा पहला पढ़ा कि कब मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं। इसका दूसरा मिसरा ये है, गुंचे अपनी आवाजों में बिजली को पुकारा करते हैं। सो मैं इस शेर को इस तरह लेता हूँ कि इट्स टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस, कि हम ये अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गुलशन में चमन में पौधे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दीज आर द नेगेटिव फोर्सेस भी होती हैं,
स्टेटस को फोर्सेस होती हैं और उसके साथ फिर चैलेंजेस भी होते हैं। यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक द फर्स्ट स्टेप, तो ये रिस्क फैक्टर तो रहेगा। अच्छा, अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलीमुल्लाह साहब, आर यू अवेलेबल टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस? जी, आई एम अवेलेबल, जी, आई एम अवेलेबल। अच्छा, ये शफीक अकबर साहब ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, मैंने नोट किए हैं आपके लिए, तो इस पे अगर एलैबोरेशन चाहिए तो आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर शफीक टू एलैबोरेट। पहला था कि मार्कअप सब्सिडी स्कीम फॉर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। देखिए, बिल्कुल ये जो गवर्नमेंट की जो मार्कअप सब्सिडी स्कीम है, उसके वो the overseas Pakistanis are eligible to obtain that scheme, and already there are number of applications by the overseas Pakistanis given under the subsidy scheme. And let me tell you that one of the banks have already approved 6 applications under the government subsidy scheme and under Roshan Apna Ghar. So yes, it is available to the overseas Pakistanis. उसके सारे tiers defined है. वो tiers you can see on the website of the banks as well as on the website of State Bank. तो वो उसमें दोनों के दोनों available है. कैपिटल गेन मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, मैंने लिखे हुए हैं इनके क्वेश्चन, जो शफीक अकबर साहब के क्वेश्चन है, आई हैव रिटन डाउन दोस क्वेश्चन। कैपिटल गेन्स मैंने अर्ज किया था कि इट इज अ सिंप्लीफाइड वन, कि आपने both at the time of purchase and at the time of sale 1% of the value you will pay and that's all. उसके बाद आपको स्पेसिफिकली कुछ नहीं देना कि जी अगर मुझे 10 मिलियन का कैपिटल गेन, you are not required to pay anything on the capital gains. You are just required to pay 1% at the time of purchase and 1% at the time of sale. This is full and final. अब क्वेश्चन आता है डबल टैक्सेशन वाला। डबल टैक्सेशन में देखिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वो जो टैक्स पे हुआ, which may be an X amount, based on the double taxation treaty between the Pakistan and the country of residence of that investor, it will be treated accordingly. Okay, they will have that certification from the bank कि इतना टैक्स इनका कटा है, इतना टैक्स against this property इन्होंने पे किया है। अब based on that certification, for example in UK, the amount of tax paid, वो जो यहाँ पर पे हुआ है और जो वहाँ का रेट है, उस दोनों का डिफरेंशियल they would be required to pay. तो इसमें they can take the advice of their respective tax consultant in their country of residence as well. As far as Pakistan is concerned, they are not required to pay capital gain as so, but they will be required to pay 1% on the value of the property, and that will be treated as full and final payment of tax on the capital gains. Capital gains हुए हैं, नहीं हुए, कम है, ज़्यादा है, whatever it is, they will be paying that 1% and they will be off. ये इसलिए किया, देखिए there were 2 arguments. One was कि आप वो उसका रिटर्न का मैकेनिज्म रखें, तो लेकिन जो हमें फीडबैक था हमारे जो फोकस ग्रुप्स की बेसिस पे, it was that people didn't want कि उस हैसल में आए कि they are required to file the returns. तो इसलिए हमने that we had agreed with FBR, 1% at the time of sale and 1% at the time of purchase will be the full and final settlement of the tax obligation as far as the property transactions are concerned. शफीक साहब का अगला क्वेश्चन था कि जो अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं, क्या उसका जो स्पेसिफिक यूनिट है which would also be verified. तो यस, लेट मी देखिए, रीरा की बात की है शफीक साहब ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर एफर्ट्स आर गोइंग ऑन कि इसकी इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड एट द अर्लिएस्ट. लेकिन हमने इंटरिम अरेंजमेंट्स क्या किए. लेकिन इंटरिम अरेंजमेंट्स में ये जो प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जो मैंने शुरू में भी डिटेल्स डिस्कस की थी, कि बैंक में देखना क्या है. मैंने कहा था कि पहली बात है कि उसको टाइटल डॉक्यूमेंट्स देखने हैं कि बिल्कुल क्लियर है टाइटल डॉक्यूमेंट्स. The builders and the sponsors have the titles and they have the authority to announce that project. फिर उसकी सारी की सारी रेगुलेटरी अप्रूवल्स देखनी है. रेगुलेटरी अप्रूवल्स में आपका बिल्डिंग प्लान भी आ रहा है. ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है that building plan approval is the part of the regulatory approvals.
उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि इसमें ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो कितने टाइप के घर दे रहे हैं, 5 मरले के कितने हैं और 7 मरले के कितने हैं, और बाकी सो एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल में भी वो सारी डिटेल्स भी अवेलेबल है, और सारा ये भी अवेलेबल है कि किस आपका जो कितने टाइप्स के यूनिट है, हर यूनिट की कितनी उसकी मेजरमेंट है, और कितने टोटल यूनिट्स अवेलेबल हैं उस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में। एंड द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन कि जी आप फॉर एग्जांपल इमार में आपने यूनिट ए सेल किया है, तो उस यूनिट ए की यहाँ पर जो बैंक का रिकॉर्ड है उसमें ये एंट्री होगी कि इमार ने यूनिट ए परचेज किया, और वो यूनिट ए इज पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस, दैट ओवरऑल प्लान दैट वाज अप्रूव्ड बाय द रिस्पेक्टिव रेगुलेटर। तो वो उसकी वेरिफिकेशन अवेलेबल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही था कि हम वो कंफर्ट दे दें अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि अगर वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी यूनिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें उस सारी की सारी जो उसकी टाइटल की क्लियरेंस, उसकी रेगुलेटरी अप्रूवल की क्लियरेंस, उसके बिल्डर्स के ट्रैक रिकॉर्ड, और उसकी ओवरऑल जो मार्केट स्टैंडिंग है उसकी बेस पे एक असेसमेंट करके उसको दे दी जाए, तो ये भी वो अवेलेबल है। जो lien की मार्किंग है, that is on the deposits and the cash balances, that is also very simple and straightforward, कि आपने सिंपली बताना है कि जी उस बैंक के पास ऑलरेडी डिटेल्स अवेलेबल है आपकी, you are account holder of the bank and you are an investor in the नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में आपने इन्वेस्ट किए हैं, उसका वो भी एक डिजिटल आपके पास वो है, and that an investment is available with the bank. बैंक को पता है कि जी कस्टमर ए हारून साहब है, फॉर एग्जांपल हारून साहब की इतनी इन्वेस्टमेंट है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, या हारून साहब इज मेंटेनिंग एक्स अमाउंट ऑफ बैलेंस इन हिज रोशन डिजिटल अकाउंट। तो वो द कस्टमर विल बी रिक्वेस्टिंग डिजिटली कि जी मेरे इस सर्टिफिकेट पे और इस मेरे कैश डिपॉजिट पे आप लियन क्रिएट कर दें for the purpose of extending finance for purchasing that particular property, so that will be done by the bank. ऑफ प्लान फाइनेंसिंग की बात की, आखिरी क्वेश्चन ऑफ प्लान फाइनेंसिंग के बारे में था शफीक अकबर साहब का। दैट इज अगेन वी हैव हमने काफी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, और मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द बैंक्स वुड बी एक्सटेंडिंग फाइनेंसिंग फॉर द अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो उसमें होगा क्या, देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ, एक वो प्रोजेक्ट्स है जिसमें जो कि आपके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल 18 की एग्जांपल है इस्लामाबाद में, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं कि दे आर ऑफरिंग दी विलास, घर आपको ऑफर कर रहे हैं सर्टेन मेजरमेंट्स के। उसमें तो ज्यादा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स में ज्यादा आसानी है कि जो पीस ऑफ लैंड है दैट इज ट्रांसफर्ड और सब लीज होता है या ट्रांसफर होता है, वो एट द टाइम जब भी आप उससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो उसकी टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, एंड द बैंक कैन क्रिएट ए लियन और मॉर्गेज ऑन दैट प्रॉपर्टी। हॉरिजॉन्टल में तो बहुत ही आसान काम है। ज्यादा मसला आता है वर्टिकल में देयर विल बी ए लैग ऑफ अबाउट 4 years। अब इस्लामाबाद में स्पेसिफिक इशू है, वो आई थिंक दैट विल बी रिजॉल्व्ड इन वेरी सून इंशाल्लाह। शफीक साहब और बाकी लोग उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं कि वहाँ पे जो सब लीज का इशू है वो भी मसला है कि सब लीज नहीं होती, बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है उसकी सब लीज नहीं होती। लेकिन बाकी शहरों में, कराची में पर्टिकुलरली मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट होती है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्टिकल प्रोजेक्ट अनाउंस किया है एंड दैट हैव 100 यूनिट्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट प्रोजेक्ट आई विल बी फाइलिंग फॉर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। The regulator will be making an assessment कि जी मेरा completion होगी ये building as per the plan, then they will be issuing me the completion certificate. Once the completion certificate is issued, the apartments are subleased in the name of, they are subleased in the name of the investor and the buyer. तो interim period में क्या होगा, interim period में there will be no sublease available, उनके पास नहीं होगी, but subsequently they will be having sublease जो कि 3 साल बाद या 4 साल बाद होगी, तो उसमें वो the bank will be able to create the mortgage। तो शुरू में mortgage नहीं होगा, it will be the mortgage of the bank will be created
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि 3 से 4 साल का टाइम होता है बिल्डिंग के कंप्लीट होने में। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए तो हमने बहुत ज्यादा आसानियां पैदा की हैं। बैंकों को हमने स्पेशली वो इंस्ट्रक्शंस दी हैं दैट दे शुड बी एबल टू असेस द प्रोजेक्ट्स, और उसमें मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं कि कैसे कैसे उन्होंने असेसमेंट करनी है। तो थिंग्स हैव बीन मेड प्रीटी comfortable and easier for the overseas Pakistani. I hope I was able to answer the questions. Okay, thank you. आपका टेलीफोन भी I think बज रहा है. So we'll revert back to you. And now we talked about marketing, we talked about technology, and then we are talking about investments. So हमारे पास combo है. He has been working in all three fields. Mr. Farhan Javed. Floor is yours, please. Thank you, Jalsa. My talk would basically encompass how housing impacts real estate. Though housing is taken as a substantial part of real estate, but in our Pakistan's context, it really matters when we say housing versus real estate. As per World Bank's definition, real estate forms anything between 50% to 75% of a nation's wealth, and that is true in Pakistan's case as well. In fact, we are about 65 to 75% upper quartile of that. That means real estate really matters in terms of job creation. It's the second largest employer in Pakistan. In terms of economy circulation, it matters. But there are fundamental challenges that exist in real estate that need to be addressed if we don't want it to get a proper leverage out of them. Primarily, I would consider is the way real estate economy works in Pakistan. One is demand driven, where, like, for example, as it was quoted by Mr. Fareed, there is requirement for housing and people need to shift to house and use them ultimately. Then there is a need for commercial that need to be used. So if we miss out that and let the market be driven by investors, जो इसलिए invest करते हैं ताकि उसे खरीद के रखें और उसके बाद उस पे whatever they generate out of it, that changes the dynamics of our real estate economy. So far, our economy has been driven and dominated by these players. उसमें सबसे मेजर जो चैलेंज आता है, एक इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है, ओवरसीज हो या लोकल हो, इन्वेस्ट करता है एक हाउसिंग सोसाइटी में, वो प्लॉट ले लेता है जिसने फाइनली शेप अप होना है 15 years 30 years, तब तक वो कंपनी उसका बिल्कुल ट्रैक हो जाता है, and we are unable to ensue any activity, any economic activity out of that real estate जो कि निकालनी चाहिए. जिस तरह बाकी एग्जांपल रियल एस्टेट की हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे आपने फार्मिंग की, उस पे फार्मर्स एम्प्लॉय हुए, उसने वेल्थ जनरेशन भी की in terms of whatever it is being produced there, उस पे जॉब एम्प्लॉयमेंट भी हुई और एक पूरी इकोनॉमी हुई by that land. इसी तरह होटल, हॉस्पिटल, factories, manufacturing plant and housing. Housing is the basic need of a human being. तो उसने 2-3 चीजें जरूर अपनी एक शेल्टर तो देना ही है, लेकिन उसके साथ उसकी एक इकोनॉमी भी encompass होती है. Whenever a house is made, उसमें 3 main impacts आते हैं. पहला impact है in terms of job creation, second is spending, third is revenues generated for the government in shape of tax. इन तीनों पे मैं elaborate करूंगा. As a real estate housing, these 3 are the benefits that we get out of it. एक 3 से 5 मरले का घर है, it employs around 35 to 40 people with man hours of around 300 to 400. इसी तरह 10 मरले से एक नाम पे जाए, ये नंबर 40 से 50 लेबर पे आ जाता है, और लेबर आवर्स तकरीबन 1000 से 1200 लेबर आवर्स पे क्रिएट किए जा सकते हैं. This direct impact of a single house on एक लेबर की 400 से 1000 दिन के लेबर आवर्स जो जनरेट कर सकता है. Similarly, spending, जब हाउसिंग हो रही है, स्पेंडिंग ट्रू सेंस में एक ट्रिकल डाउन होता है. Once a plot is generated into a house, सबसे पहले उसमें before any major activity takes place on the ground, उससे पहले ही architects, engineer, design they are taken on board. एक economic activity clearly generate हो जाती है. Later on, उसकी direct impact आता है, जो bill of materials है, वो सीधा small and medium industries पे आता है. Again, जिसमें सीमेंट, सरिया सबसे मेनली आता है, लेकिन हाउस कंपेयर टू कमर्शियल ज्यादा उसके जो एलिमेंट्स हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते. दो as a country we should work on कि हाउसिंग की जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं. कमर्शियल में डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं. कमर्शियल में we end up
importing 70 to 80% of the equipment or the material that is used in the building. तो वो एक तरह से economic leakage होता है, which does not really drill down. Further on, the direct impact is when we pay the laborers, the material that is bought, the local economy gets a move. Indirect होता है वो labor का move होता है, वहाँ एक चाय का ढाबा से लेके एक बड़ी छोटी सी economy उस area की एक घर generate करता है. Third is the revenues for the government, जिसमें local permit taxation आ जाते हैं. तो ये तीनों चीजें एक simple घर बनाने से actuate होते हैं. If we have जो अगर हम घर बनाएं 1 लाख घर बनाएं, which is very minute when looking at our requirement, housing requirement, 1 लाख घर का impact हमारे पे 3 से 4 लाख into 100 हमारे लेबर बेस जनरेट हो जाते हैं, जो कि अगेन 3 से 4 लाख नौकरी को होते हैं if you are spreading it across in a year or two. Similarly, the impact on GDP can be as high as 1 to 1.3% if we make 100K houses in the perimeter of 3 मरला से 10 मरले के बीच में. इसमें जिस तरह मेंशन आज का हमने टॉपिक रोशन एंड डिजिटल अकाउंट, रोशन अपना घर का, हाउ डज दैट सफिशिएंट दिस इकोनॉमिक मॉडल? आपकी रियल एस्टेट में आरडीए जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो आपकी फाइनेंशियल बैंडविड्थ इंक्रीज कर रहा है फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज टू ब्रिंग मनी एंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. फिर रोशन अपना घर उसको फर्दर नैरो डाउन कर रहा है, इंस्टेड ऑफ बाइंग जस्ट प्लॉट्स और एनी अदर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जिसकी शायद इतनी एक्टिविटी ना हो, यू आर मेकिंग देम फोकस मोर टुवर्ड्स हाउसिंग. और हाउसिंग से इवेंचुअली द साइकिल इंस्यूज जिस तरह हमने किया. देयर इज अ एविडेंस दैट रेमिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके हाउसिंग रिक्वायरमेंट पे. मोर ओवर इसका ज्यादा है नंबर ऑफ रूम्स अ पर्सन यूजेस. सो आपके ओवरसीज के सो फार जो जीसीसी के इनिशियल ओवरसीज थे, उनका जो द टेम्परामेंट वाज व्हेनेवर दे वेंट अब्रॉड दे वुड ब्रिंग इन मनी टू इन्वेस्ट इन देयर लोकल रियल एस्टेट. जो उनका अपना घर था उसमें नया कमरा ऐड किया, नया घर बनाया, या वाज अ फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट फॉर देम कि उसे रियल एस्टेट के अंदर ही लेके आए. फर्दरमोर जिस तरह हमारा ओवरऑल जिस तरह साइकिल आउट हो रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टार्टेड के शुरू से चीजें स्ट्रीमलाइन करते रहे. वी हैव कम टू द पॉइंट वेयर वी हैव ब्रॉट इन बैंक्स टू फाइनली फोकस ऑन द रियल एस्टेट बाय गिविंग देम 5% ऑफ देयर क्रेडिट टुवर्ड दिस इकोनॉमी. उसमें अब बिल्कुल लास्ट बिट पे जिस तरह शफीक साहब एंड अदर्स हैव मेंशन्ड इज द एरिया वेयर डू दे इन्वेस्ट, हाउ डू दे डू इट. Yes, putting out projects on our website, pre-approved projects, उस siphoning off जरूर हो रहा है in terms of certain projects पे आप कर रहे हैं. But I think there is a huge threat अगर कोई भी ऐसी investment real estate की housing या किसी project में हो जाती है through these channels जो fruit bear नहीं करते और वो lag out हो जाते हैं, it would be very detrimental to the whole program जो हो रहा था. We have seen similar examples in the past where 2-3 major housing schemes that were focused toward overseas Pakistanis failed to deliver the results. उसके बाद real estate का overseas Pakistani का trust बहुत काफी देर तक damage रहा था. I believe if we're able to systemize the way where we focus on the way we have those approved developers, approved housing societies on board. Though I understand banks ने जिस तरह इनको due diligence करना शुरू किया है, they started focusing on different real estate projects, developers. It is going to filter out a lot of things. But unless or until we have a legal framework in the shape of RERA, which regularizes the real estate agent, real estate developer, overall उनकी transactions को वो monitor करके legal cover देता है, we'll have this threat over where we are risking the investment that overseas is bringing in. This was about my part, जिसमें मैं overall ये इसको discuss करना चाह रहा था कि how does housing fit in this real estate economy. With our experience, जो Grana.com or the number of hits that we get on the website or the projects that we are hosting, we get the average number of overseas Pakistanis investing in overseas Pakistanis is around 25% to 30%. This is the regular size. किसी भी housing society या किसी project में आप देखेंगे उसमें 25 से 30% overseas का होता है. I believe the number is a bit larger, जिसमें issue ये पहले exist करता था, overseas को पाकिस्तान में पैसे remit करना through hundi, hawala, या informal channels के, they would bring this money here in Pakistan, ask their family members to go and invest that project here. So with the introduction of Roshan digital accounts, this would channel out loud, the numbers is increasing. With Roshan Apna Ghar, the focus on real estate would increase, and we believe the number would touch easily somewhere near 40%
40% of investment in any housing project focusing on SCCA or AAA would have overseas investment. Similarly, same number would be for any vertical or residential, vertical commercial project that goes about it. So my overall understanding of this is that we are in a very right direction. We are fixing ourselves. We are oiling up all the channels. The overseas keep investment right from there till the end. Execute okay, close hoti hai, and they would have a lot of confidence. For example, in terms of opening an online account, today SBB also announced a local residents बिल्कुल branchless banking online जाके ही अपना bank account खोल सके. This would add confidence to the overall ecosystem that exists. As real इसमें जो stakeholders हैं, State Bank should look into this affair, how to make it more easy to get the right developers and right players on board. जो real estate के से आते हैं, जहाँ तक developers आ जाते हैं, they should be supporting the formulation of laws like VERA, ताकि वो चीजें formalize हो सकें. Banks would be the driver since they have the push, they will have to pull. They will be the main players when it comes to making systems to identify the right players, identifying the right projects, because they will be the channel where overseas Pakistan will be finally investing here in Pakistan. That would be it, sir. मेरा इसी पे था कि overall इसी पे ज़्यादा digest ना हो. Thank you, Mr. Farhan. That was a wonderful exposition. You gave a complete rundown of the housing, the role of housing in the real estate sector. Very interesting to note, you calculated that if I construct a 5-marla house, then how much job opportunities or labor force is engaged. So that is a tremendous thing. And this is the best part of real estate sector, because you are going to give job opportunities and employment opportunities to the people, starting from educated lot, professionals, right up to an ordinary labor. So this is something tremendous, and this has to be done. There are teeming millions who are out of job. Just to let you know, we conducted a webinar. In one of the webinars, an expert on the subject mentioned that virtually our 90% graduates are unemployable. So therefore, we do talk about the linkage of academia, and we are working towards that. Overseas component in real estate housing sector is 25% to 30%. The litmus test is that this should increase with so much of, we are going to give incentives to them. So therefore, this percentage should increase, and we should entice them for. Now we have few questions. I'll take one by one. Most of questions have been answered. We have a question that we have seen that many overseas Pakistanis like me have lost investments in housing schemes of even great repute. What is the guarantee that we do not face the same again in this case? Risk factor. Who would like to answer this question? पैसा तो नहीं डूब जाएगा जी, एक ओवरसीज पाकिस्तानी पूछ रहा है. शफीक, आप आंसर करेंगे प्लीज इसको? सर, ये रिस्क जो है पैसा डूबने वाला, ये तो उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक हम पूरे सिस्टम को या पूरे इकोसिस्टम को बेहतर नहीं करते हैं. एंड दैट इज द होलिस्टिक अप्रोच. हाँ, ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, अभी जो बातचीत हुई रियल एस्टेट के सेक्टर के पोटेंशियल की और रियल एस्टेट के सेक्टर के पोटेंशियल के रियलाइजेशन में ओवरसीज पाकिस्तानीज की कंट्रीब्यूशन की, तो फरीद साहब ने कहा कि जी डिमांड वाइज उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी डिमांड जो है वो, मैं तो 2 करोड़ कहता हूँ अगले 10 से 20 साल में, उन्होंने तो कहा कि इससे भी ज्यादा है. कितनी बड़ी डिमांड है, और उस डिमांड को अगर पूरा कर दिया जाए तो फरहान साहब ने मेंशन किया कि आज पाकिस्तान की जो वैल्यू है उसका 65% टू 75% जो है वो पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर की वैल्यू है, और ये वैल्यू बनती है तकरीबन $1 ट्रिलियन के इर्द गिर्द. अगर डिमांड पूरी कर दी जाए तो $2 ट्रिलियन जो है मजीद पाकिस्तान की वैल्यू में ऐड किया जा सकता है. ये जो हमारी 2 करोड़ घरों की डिमांड है, और उसमें $750 बिलियन, जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स या अलाइड इंडस्ट्री या रेनोवेशंस, इनकी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं. उनको अगर लोकली मैन्युफैक्चर कर लिया जाए तो ना सिर्फ हमारी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इसमें आएगी,
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम हो जाएगी और ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट्स भी हम बढ़ा सकते हैं, चीज़ें भी सस्ती हो सकती हैं। जो रियल एस्टेट का हिस्सा है ये आपका जाता है एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा पोटेंशियल है, सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर फरहान साहब ने मेंशन किया, लेकिन आगे चल के जो इसमें जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जॉब्स जो है अगले 15 से 20 साल में रियल एस्टेट के सेक्टर में क्रिएट की जा सकती हैं, कंस्ट्रक्शन में और अलाइड सेक्टर में, अगर लोकल हम फैक्ट्रीज लगाएं। एट द सेम टाइम अगर ये हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो इकोनॉमी में भी इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज्यादा रियल एस्टेट के सेक्टर में आती है। तकरीबन $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है फ्रॉम विद इन पाकिस्तान एंड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानीज इस सेक्टर के अंदर इस कैलेंडर ईयर में 2021 में। तो इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज्यादा इस सेक्टर में आती है और इकोनॉमी भी इस सेक्टर के थ्रू, जैसे आपने कहा जन सर कि रिवाइवल हो सकता है, इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हाईएस्ट पर कैपिटा डिमांड है पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट की। और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का पैसा डूबता है, ये सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज का नहीं डूबता, ये पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनका भी अनफॉर्चुनेटली पैसा डूब जाता है। ये इतना बड़ा इशू है डेट कैपिटल या कैपिटल ट्रैप का कि आज 60 से 70% जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जाती है वो ट्रैप हो जाती है या इन सम केसेस वो डेट इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे अभी रोशन अपना घर का इनिशिएटिव लिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, हम लोग जो रियल एस्टेट के सेक्टर में काम कर रहे हैं हमें चाहिए कि इन इनिशिएटिव्स का, और जो इसमें बैंक्स भी अब स्टेक होल्डर बन गए हैं, जैसे आपने 5 स्टेक होल्डर्स की बात की है जिसमें एसबीपी भी है, बैंक भी है, इन इनिशिएटिव्स का वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट टू स्ट्रीमलाइन एंड ट्रांसफॉर्म द रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। इसको बेहतर किया जाना चाहिए और उसको बेहतर करने के लिए बड़े सिंपल स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। जैसे एक बात हो रही है कि जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाए उसका वेरिफिकेशन का एक सिस्टम बनाया जाए। सलीमुल्लाह साहब ने कहा कि जब आप बैंक्स के थ्रू करेंगे तो शायद कोई एक चेक लिस्ट है जिसके थ्रू वो ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका एलओपी या बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड है और जो यूनिट ये बाय कर रहे हैं ये इट इज एन अप्रूव्ड यूनिट। लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे इसको किया जाए और गवर्नमेंट इसका एक ऑनलाइन प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सिस्टम, जैसे कि अभी डिजिटलाइजेशन या डिजिटल मैपिंग के थ्रू इस्लामाबाद में अभी कह रहे हैं और कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये हो जाएगा, दैट वुड बी अ रेवोल्यूशनरी चेंज। तो पहला जो पैसा डूबने वाला जो इशू है उसको अगर रिजॉल्व करना है तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू वेरीफाई अ यूनिट बिफोर यू इन्वेस्ट इन इट। सेकेंडली जो कुछ और स्टेप्स लिए जा सकते हैं, रेरा की जैसे हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, देखिए रेरा की इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट कुड बी अनदर बिग रेवोल्यूशनरी स्टेप हियर इन पाकिस्तान। लेकिन ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके किया जाए, इसके अंदर मेन स्टेक होल्डर्स डेवलपर्स भी हैं, स्टेट एजेंट्स भी हैं, उनकी रजामंदी के साथ उनकी पार्टिसिपेटरी एक्सरसाइज के साथ हमें रेरा के थ्रू रूल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू। अच्छा, अगर ये रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो होगा क्या? रेरा हर जगह पे है, या रेरा है और या इस तरह के दूसरे एक्ट्स हैं जिसके थ्रू एक तो सर्विस चार्ज एग्रीमेंट होता है स्टेट एजेंट और जो भी उसका क्लाइंट है उसके बीच में, बेशक वो टेनेंट है या बायर या सेलर है। दूसरा, स्टेट एजेंट जो है वो पूरे का पूरा जो है ट्रांजैक्शन उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं और ये अभी FATF में भी आ गया कि 5 साल तक हमें रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। इसके अलावा ये है कि स्मॉल कोर्ट्स बन जाएंगी, छोटी कोर्ट्स होती हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स पाकिस्तान में उनको कहते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, रियल एस्टेट कोर्ट्स, व्हाटएवर वी कॉल, दुबई में इनको रियल एस्टेट कोर्ट्स कहते हैं। ये जो बड़ी हाई कोर्ट्स और बड़ी जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो बर्डन है कि जी इस वक्त 60-70% रियल एस्टेट रिलेटेड केसेस हैं, ये छोटी कोर्ट्स में जाके फौरन से ये इश्यूज रिजॉल्व हुआ करेंगे रियल एस्टेट रिलेटेड, लोगों को भी रिलीफ मिलेगा, कोर्ट्स का बर्डन भी कम होगा, ट्रस्ट भी लोगों का रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर आएगा। और आज अगर ओवरसीज पाकिस्तानी की 30% रेमिटेंसेस इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जाती हैं रियल एस्टेट के सेक्टर में, जो कि तकरीबन $10 बिलियन है, उसमें से आज 60-70% अगर स्टक हो जाती हैं, जस्ट इमेजिन सर एंड द पैनलिस्ट एंड एवरीवन लिसनिंग कि द पोटेंशियल वी हैव इन दिस कंट्री, इफ वी, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का इशू है अगर आज इसको हम खत्म कर दें, इफ वी गिव ट्रस्ट टू ओवरसीज पाकिस्तानीज कि वो रियल एस्टेट में यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे 20 से 25 इन सम केसेस 30% तक की भी अप्रिसिएशन जो है वो ली जा सकती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो आप इमेजिन करें कि कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी और उस इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह के रोशन डिजिटल अकाउंट्स और इस तरह के जो हमारे मैकेनिज्म हैं इनके थ्रू आएगा।
तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, गवर्नमेंट लेवल पे होलिस्टिकली इसको डील करना पड़ेगा. Only then we'll be able to resolve the issue once and for all. Thank you. Thank you. I hope Sabah Amjad asked this question. She's listening, and I hope this has been adequately answered. एक तो और क्वेश्चन है, is Roshan अपना घर Sharia compliant? Salim साहब? Okay, we'll have Asif साहब, please. Is it Sharia compliant? जी जी बिल्कुल, इसके दोनों वर्जन हैं. इसमें इस्लामिक प्रोडक्ट्स भी हैं और उसी का कन्वेंशनल बैंकिंग का रेप्लिका भी अवेलेबल है. तो ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स आर ऑफरिंग बोथ टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज फॉर देयर कस्टमर्स. whosoever is interested in Sharia compliant mortgage loan वो भी अवेलेबल है और जो कन्वेंशनल बैंकिंग वाला है वो भी अवेलेबल है. अच्छा, एक चीज जो इससे पहले सबा का सवाल था, मैं सिर्फ उसमें एक मुख्तसर सी बात करना चाहूंगा. एक चीज तो ऑलरेडी अवेलेबल है कि बैंक्स का जो अगर कोई कस्टमर बैंक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है और मॉर्गेज फैसिलिटी लेता है तो आई थिंक बहुत हद तक उसका वो रिस्क मिटिगेट हो जाएगा, क्योंकि बैंक्स किसी प्रोजेक्ट की भी फाइनेंसिंग करने से पहले उसमें जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वो उसकी पूरी जांच पड़ताल ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे. सो एक काफी हद तक उनका रिस्क मिटिगेट हो जाएगा. सेकेंडली जो चीज आज अवेलेबल नहीं है एंड आई थिंक वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, वो है कि हम इस तरह की किसी अच्छी रिप्यूटेड इंश्योरेंस कंपनीज को एंगेज करें, और अगर बैंक्स ने भी अपनी ड्यू डिलिजेंस ठीक की हुई है और इन्वेस्टर का भी जो कि उसने पैसा लगाया है, तो अगर उसके ऊपर कुछ इस किस्म की फ्रॉडुलेंट चीज की कोई इंश्योरेंस डिजाइन की जा सके जिसको कस्टमर जो है वो उसका रिस्क प्रीमियम पे करता है तो उसको एक एडेड कंफर्ट मिल सकता है, वो चीज कहीं पे अलॉन्ग विद द लाइफ इंश्योरेंस और द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वो चीज एक एड ऑन फीचर के तौर पे आ जाए एट सम कॉस्ट, तो आई थिंक दैट कैन आल्सो एड वैल्यू टू दिस. थैंक यू. थैंक यू आसिफ साहब, दिस इज अ वेरी गुड सजेशन. ये तो बड़ा कंफर्ट लेवल मिल जाएगा कि जी आप इतना % प्रॉपर्टी का एडिशनल दें और आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी प्रॉपर्टी अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट. ये राजा कदीर साहब हैं बर्मिंघम से, कह रहे हैं कि जी अगर मुकदमा बाजी और कब्जा ग्रुप से जान छुड़ा दें तो बेहतर होगा. हमने इस पे तो बात की है पहले भी. यस, लिटिगेशन की पहले बात हुई है और कब्जा ग्रुप का भी यही है कि आई थिंक गवर्नमेंट लेवल पे इस पे बहुत कुछ हो रहा है, बोथ बाय द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, बिकॉज ये जो कब्जा ग्रुप वगैरह है, जब ये वेरिफिकेशन आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन बेहतर हो जाएगी, तो आई थिंक ये जो राजा साहब अय्यूब राय साहब, ये इस पे बहुत काम हो रहा है और मुकदमा बाजी पे भी और खास तौर पे कब्जा ग्रुप पे भी, हुकूमती सतह पे भी, और इसमें अवेयरनेस भी बढ़ रही है. तो ये जितनी टेक्नोलॉजी और आएगी तो होपफुली ये भी बेहतर हो जाए. एक क्वेश्चन है, प्रेजेंटली द रियल एस्टेट सेक्टर इज बूमिंग इन पाकिस्तान. Will this period of boom continue? What if the prices crash? मैं इस पे फरीद साहब आपसे चाहूंगा जरा स्पेक्टेटर्स व्यू, ऑडिटर्स व्यू रादर. फरीद साहब सुन रहे हैं आप? अच्छा, would anyone else like to answer this question? ये जो बूम पीरियड, क्वेश्चन ये है कि जी बूम पीरियड है अभी तो बड़ा हंकी डोरी, everything is going smooth. So what if the prices go down? Investment की हुई है उन्होंने, so how to insulate them against that? Anybody like to answer? Gee, let me respond to this question. Okay. देखिए, if you see, probably Fareed sir would also like to add, अगर वो available है उनके पास तो data भी available होगा. If you plot the 20 years or 25 years data on the real estate returns, you would see about more than 25% per annum return on the real estate investments. Particularly if you talk about the DHA in Karachi, phase 8, etc. So it's more than 25% returns per annum for the last 20 years of continuous. There may be a small period of very short periods of a big dips, but when you normally the real estate investment is a longer term perspective.
when you would see the real estate investment on a longer term perspective, it's a win-win situation. Just see the 25 years data or 30 years data. You would see the results that the returns in the real estate sector in Pakistan has been humongous. आप किसी भी सेक्टर से कंपेयर करके देख लें, इवन स्टॉक मार्केट को देख कर से कंपेयर कर लें, when you would plot the real estate sector on the longer term horizon, there may be short, अगर कोई short term perspective लेते हैं तो that may be having some risk कि जी कुछ ups and downs आ सकते हैं, but the people who are taking a longer term perspective, they are always better off in the real estate market in Pakistan. True. देखिए एक ना I give lot of credence to the village wisdom. और विलेज विजडम में कहते हैं कि जमीन कभी ना बेचना, और ये अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बहुत फायदा देती है. तो इट इज नॉट ये आंसर के लिए है कि जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि इट इज नॉट स्टॉक एक्सचेंज द प्राइसेस, यू हैव टू सी लिटिल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. एक सॉरी ये सलीम साहब एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए. इज इन्वेस्टमेंट इन एनपीसी सेफ एंड गारंटीड बाय गवर्नमेंट? देखिए ये बिल्कुल क्लियरली मैं बता दूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है that investment is not guaranteed by anybody. जो अभी तक आपने देखा है रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होती है, that is not guaranteed by any person. लेकिन क्या है कि हमने ये, जैसे मैंने पहले अपने उसमें अर्ज किया था कि we have tried to provide that comfort to the investors कि जो उसकी मिनिमम ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए वो करके देख ली गई है. अब नाउ देखिए प्री अप्रूव प्रोजेक्ट्स में तो कर ली गई है. सिमिलरली जो उसके अलावा किसी ने प्रॉपर्टी लेनी है, मैं अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से बाहर बैठा हूँ, मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्री अप्रूव लिस्ट, तो उसमें I should make a full assessment कि जो मैं प्रॉपर्टी जो मैं घर ले रहा हूँ या जो मैं अपार्टमेंट ले रहा हूँ, उसके सारा मैंने वो चेक अप या खुद कर लिया होगा, या मैंने अपने जो भी मेरे यहाँ पर फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी जो भी मेरे पास मीन्स अवेलेबल है उसकी बेसिस पे आई वुड गेट इट डन एंड देन आई विल बी मेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट. तो जो आपके पास जो नहीं है, जिनको बैंकों ने किया हुआ है, उसमें बैंक आपको वो कंफर्ट दे रहे हैं. बट ये कहना है कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट गारंटीड है, गारंटीड कुछ चीज नहीं होती. गारंटी तो देखिए ना, अगर गवर्नमेंट की अपनी कोई सिक्योरिटी है, जो गवर्नमेंट ने आपसे पैसे लिए हैं, गवर्नमेंट उन पैसों के लिए आपसे गारंटी करती है. बट ये वाले पैसे आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में लगा रहे हैं, अभी भी आप लगा रहे हैं, अभी आप लगाते थे तो उसकी रिपेट्रेबिलिटी के इश्यूज थे. सलीम साहब वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का पूछ रहे हैं कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट गारंटीड है एनपीसी में. नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अगर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है वो तो गारंटीड है. दैट इज द सॉवरेन इंस्ट्रूमेंट. दैट इज सॉरी अगर मैंने वो क्वेश्चन पे कॉम्प्रिहेंड नहीं किया था तो फिर मैं मिस कर गया. नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सॉवरेन इंस्ट्रूमेंट है, वो तो फुली गवर्नमेंट बैकिंग है. सलीम साहब मैं थोड़ी देर के लिए मैं जरा शॉक हुआ था कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, बट देन यू परहैप्स एलैबोरेटेड मोर कि जो आपका अपना ये जो घर वाला है प्रोग्राम, इसमें क्या है. इसमें most of the questions, there were a lot of questions trickling in, most of the questions have been answered. So what I'll do is that I'll go around the table and request you for parting comment. So may I ask parting comment, Asif Saab, you're just 2-3 minutes, your parting comment please. Thank you very much, Jalal Saab. I think it was an excellent session. A lot of learning has taken place. बहुत stats पे भी बात हुई. फरीद साहब ने, शफीक साहब ने बिल्कुल जो मार्केट सेंटिमेंट है, और सलीमुल्लाह साहब ने जो बिल्कुल एक ओवरऑल रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव दिया. इसी तरह फरहान साहब ने भी स्टैट्स पे भी बात की. और I think it's a journey which has just been started. अब बहुत काम हुआ है इस प्रोडक्ट को यकीन करें कंसीव करने में, और इसको आज इस स्टेज पे लाने पे जितनी एफर्ट, जितनी कंबाइंड विजडम, जितने सेशंस और जितनी ना इसमें दिन देखा गया, ना रात देखी गई है, ना सैटरडेज देखे गए, ना संडेज देखे गए. और इस पे सेंट्रल बैंक ने
नेफ्टा ने, बैंकों ने और जो रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबने मिलकर बहुत काम किया। आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टार्ट है और हम आगे बहुत इसमें जा सकते हैं। एक चीज मैं जो समझता हूँ जिसका ताल्लुक इसमें फर्दर रिस्क मिटिगेशन से भी है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इनकलकेट करने से भी है, वो है कि रियल्टर्स को की भी कोई रेगुलेशन उनकी होनी चाहिए। उनको किस तरह से एक कवायद और जवाबत के अंदर उनको डिसिप्लिन किया जा सकता है और उनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी हो और उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो, और लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के जरिए, नॉट जस्ट कि जी वो DHAs के लिए कुछ उनके रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, वो जितने डेवलपर्स और जितने ये रियल्टर्स हैं, इनकी भी अगर एक अच्छा फॉर्मल प्रोसेस जो कि वो इंट्रोड्यूस हो जाए गवर्नमेंट के लेवल पे और उसकी अच्छी मॉनिटरिंग भी हो और इनके ऊपर एक वॉचडॉग बॉडी भी हो, तो आई थिंक दैट कैन प्रोवाइड एन एडिशनल कंफर्ट टू द इन्वेस्टर। बाकी सिर्फ मैं यही कहूँगा टू द ऑडियंस कि वो इसमें जरूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, जो इसमें प्राइसिंग है, जो अफोर्डेबिलिटी है और जो ईज ऑफ प्रोसेसिंग है, इट वाज नेवर इन द पास्ट। ये इस वक्त अवेलेबल है, बैंकों का बहुत पुश भी है और शुरू में भी कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हों, तो चूंकि एक नई चीज है, बट उससे बिल्कुल भी वो डीमोटिवेट ना हो। इंशाल्लाह उनका वहां बैठ के उनकी फैसिलिटी यहाँ पे उनके आने से पहले अप्रूव हुई हो, and they only then come with an approved facility in their hand and they just go and finalize the deal। तो एक बहुत बड़ा, जो उनको 4-4, 5-5, 6-6 चक्कर लगाने पड़ते और फिर भी ना उनको कुछ पता होता, तो एक बहुत बड़ा जो है वो माइलेज मिल चुका है। So with these words, I would finish this discussion. Thank you very much, everyone. Thank you. Farhan, your parting comment, please. Farhan. So thank you for hosting this conversation. Again, I would second Asif Saab here. We have started the journey, and let me be very honest here, okay, what has happened in last couple of months has been phenomenal. The impact would be seen in coming months and coming years, but what we have achieved in last few months can't be documented anywhere in our history where real estate, banking and regulatory bodies were able to build out this thing. As he mentioned, if RERA is brought in, we'll be able to classify the real estate agents and the developers. जब उनके ऊपर एक licensing power और उनकी transactions को monitor किया जाएगा, उससे काफी चीजें streamline हो सकेंगी. And the final cornerstone would be once we have our inventory या real estate हमारी जब digitalization की तरफ आ जाएगी, and every entry would have a digital ID जिसके against ये सारी transaction हो सकेगी. We'll be able to implement any new model that comes in, जिसमें शफीक साहब ने टोकनाइजेशन का कहा था, ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शंस का मेंशन हुआ है, या जो अभी करंट बैंक्स का स्टार्टिंग ऐप से एंड तक चेन है वो बिल्कुल डिजिटल और ऑनलाइन एक्सपीरियंस होगा। Thank you. Fareed Alam Saab, are you listening or are you linked with us? I think we have lost the connection. Salimullah Saab, your parting comment, please. Thank you, Harun Saab. Thank you so much. I think it's an excellent some webinar that was conducted, and hope so that the participants would have benefited from the information that has been shared. और मैं बस parting comment में यही कहूँगा कि yes, this is the start of a journey, और उसमें हमने कोशिश यही की है कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए हम आसानियाँ पैदा करें, और इसमें further be based on the feedback that we are receiving from the webinars, etc. We would keep on improving things. ये पार्टिंग में आखिर में बस यही कहूँगा कि जो आपके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, use that platform with full confidence. बैंक्स को हमने fully geared up कर दिया है towards your service. There are special instructions to the banks के जो भी हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं जिन्होंने डील करना है ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ, उनको they need to be fully trained, और उसकी मॉनिटरिंग भी कंटिन्यूअस बेसिस पे the central bank is doing, so that there should not be any inconvenience to our overseas Pakistanis. अच्छा, इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो there are
platforms available. State Bank का भी platform available है. You can send your complaints on that platform. और मैं आपको ये शो करता हूँ, अभी तक ये जो 234-35,000 हमने रोशन डिजिटल अकाउंट्स हमारे खुले हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि the kind of service and the kind of response the people are getting both from the banks as well as from the central banks. So we are here to serve you, and we'll keep on improving the overall service quality as well as the product showcase आपके लिए. So thank you so much. Thank you. Mr. Shafiq Akbar, please. Your parting comment. It's been an excellent session, sir. Thank you very much for having me. Great learning, very useful information, some very good suggestions as well. और वो मैं देख रहा था कि जैसे आसिफ रियाज साहब ने इंश्योरेंस वाली भी बात की. I think that's something which we need to work on as well. मैं सलीमुल्लाह साहब से सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि स्टेट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 20, 25, 30% तक जो है. एंड दिस इज ट्रू. अगर आप देखें इस्लामाबाद पे जो DHA है उसकी एवरेज जो एप्रिसिएशन पिछले 22 से 23 साल में रही है वो 25% से ज्यादा है. इसी तरीके से उन्होंने मेंशन किया कराची का भी. ग्रेट पोटेंशियल एज फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न. डिमांड भी बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत आ रही है और रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज कि जहाँ पे 10-12% मैक्सिमम रिटर्न होगा. पाकिस्तान में अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ 20 से 25% रिटर्न लिया जा सकता है. और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे अभी ये रोशन डिजिटल अकाउंट या रोशन अपना घर, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज को बहुत हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं. और इंशाल्लाह अभी जो मॉर्गेजेस का एक शुरू हुआ है तो इंशाल्लाह ये फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगी और मॉर्गेज इंडस्ट्री भी पाकिस्तान की बढ़ेगी. जो कुछ सजेशंस जिस पे हमारी बात हुई कि ओवरऑल इकोसिस्टम को हम बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हमें काम करना चाहिए. और आई थिंक उसमें जो मिसिंग अभी हमारे पास पीसेस हैं वो 2-3 ही हैं. एक ये है कि हम कोई प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन का सिस्टम ले आए और रेरा के थ्रू एस्टेट एजेंट्स को और डेवलपर्स को अच्छे तरीके से रेगुलेट करें. ये अगर हो जाता है और जिस तरीके से हम लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ओवरसीज पाकिस्तानी और जो पाकिस्तानी यहाँ पे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी सिक्योर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी. और इंशाल्लाह दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग फॉर. Or this is today's session is just a contribution towards that. Thank you very much, General Saab, and everybody, all the panelists and the listeners for having me. Thank you. Thank you, Shafiq Saab. Ladies and gentlemen, ladies, because there are a number of ladies who are listening and watching our program, it has been a great session. And the kind of expert opinions coming from people from various backgrounds, these are the stakeholders. And I personally stand educated on a number of issues. And this is true that Roshan Apna Ghar is a new scheme. It has just been launched, but there's a tremendous potential. And there's a need to continuously monitor it. And there could be a space for a mid-course correction and improvement in the system. So a number of suggestions will come later also, and I'll communicate with the eminent panelists also. And may I thank you all. Mr. Salimullah, Mr. Farid Alam, Mr. Shafiq Akbar, Mr. Asif Riaz, and Mr. Farhan Javed from being with us. That's all from Iqbal Institute of Policy Studies, Islamabad. Have a great leftover day. Thank you very much. Khuda Hafiz. Thank you, Ji. Thank you, Khuda Hafiz. Thank you. Thank you.